सो आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ और म्यूज़िक का तो मैं बिल्कुल ही स्टूडेंट हूँ। आप तालीम लेके सीख के बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुनने से जो आपको तालीम मिलती है वो भी उसकी एक अलग खुशबू है, उसकी अलग अलग अहमियत है। फीफा वर्ल्ड कप में मैं 90,000 लोगों को साउथ अफ्रीका में देखकर इतनी खुशी हुई, इतना आई फेल्ट सो प्राउड, इतना गर्व महसूस हुआ कि इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभार एक दिमाग में एक वर्ड आ जाता है कि आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा, थोड़ा कम है मगर ज्यादा हो जाएगा। शाहरुख इज लुकिंग एट द तिरंगा and he's got tears in his eyes। तो वो पूरा सीन था और वहां पे बैकग्राउंड स्कोर था और अच्छा था। यश जी called us, there was 1 week to release, he said I want a song here। I'm like, एक हफ्ते में कैसे हो? एक हफ्ता रिलीज को है, मतलब गाना हमें उसी रात को करना था। मेहनत के साथ किस्मत का भी बड़ा खेल होता है यार। अरे रिकॉर्डिंग है, अरे ये मत सोचो, रिकॉर्डिंग है, वाओ लेट्स गो, लाइक यू नो, अरे यार कल फ्लाइट लेना है, शो पे जाना, अरे कल शो पे जाना है, बी एक्साइटेड। ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग टैलेंटेड है और वो नॉट सक्सेसफुल, बी ग्रेटफुल। आशीष ने मुझे ये कहा, पूरी दुनिया जानती है, बट मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ ये, एंड दैट यू नो, वो उस गाने की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ गई एंड वी मूव टू बॉम्बे एंड इट्स सच अ बिग थिंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ यू यूज टेक्नोलॉजी विद सोल, दैट्स व्हेन थिंग्स विल गो अहेड। इफ यू डोंट हैव सोल, टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट fading। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम ही काफ़ी, सलीम मर्चेंट फ्रॉम द फेमस डुओ सलीम सुलेमान। आपने उनके गानों के बारे में सुना होगा, उनके फिल्म्स प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वो कौन है। मेरे लिए सलीम मर्चेंट एक समअप है 3 चीज़ों का। पहली चीज़, सही मायने में वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जो 360 डिग्री फोकस है उनका। तो आप फिल्म, अगर म्यूज़िक करते हैं तो फिल्म म्यूज़िक भी करते हैं, नॉन फिल्म म्यूज़िक भी करते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी करते हैं, कोलैबोरेशंस भी करते हैं, जिंगल्स भी करते हैं, रीजनल भी करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं। जब वो लाइव कॉन्सर्ट करते हैं तो वो कॉलेज भी करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, कॉर्पोरेट भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, फेस्टिवल्स भी करते हैं, और जिस भी तरीके का नाम आप सोच सकते हैं वो सब करते हैं। इंडिया में भी करते हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं। अगर आप बोलोगे कि वो अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अवार्ड्स भी उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। दूसरी बात, ही इज़ वेरी अडेप्टिव टू चेंज। मैंने बहुत कम आर्टिस्टों को देखा है अपने करियर में जो किसी भी चीज़ को बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी चीज़, वो बहुत ही हैंड्स ऑन है और वो फुल पैकेज है। गाते हैं, कंपोज करते हैं, लिरिक्स के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ऐसे ही एक बहुत सारी खूबियों वाली पर्सनैलिटी से आज हम बात करेंगे। और मुझे ये बोलने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं उन सारे म्यूजिशियंस और सारे गेस्ट में से सबसे हैंड्स ऑन इन द होल गेम इज सलीम मर्चेंट। सो सलीम, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। इतना कमाल का है, आपने वेलकम इंट्रो दिया तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, बट मैं एक चीज़ आपके इंट्रो के बारे में कहूँगा कि आपने जो भी कुछ चीज़ कही, आई वांट टू से दैट इट्स ऑनेस्टली मैं नॉलेज का भूखा हूँ और दैट्स द ओनली थिंग दैट रियली एक्साइट्स मी द मोस्ट। मैं आज यहाँ पर आपके साथ हूँ तो मैं कुछ लेके जाऊँगा, नॉलेज, experience, and experience is really something that always teaches you True. one thing, something or the other। तजुर्बा एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आज भी मैं आया हूँ एक कमाल का एक्सपीरियंस लेने के लिए। आपका पॉडकास्ट जब से मैंने देखा है, फर्स्ट एपिसोड से ही मैं आई वाज हुक्ड ऑन टू इट। मैंने काफी सारे एपिसोड्स आपके देखे एंड यू डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब दार्सिन। थैंक यू सलीम। आई थिंक हम बहुत सिमिलर लोग हैं इस मामले में। हाँ, मुझे भी सीखना बहुत पसंद है और मैं मिलता हूँ तो सीखता ही रहता हूँ। मेरा एक्चुअली पहला सवाल जनरली यही होता है कि हर इंसान आपको अलग अलग तरीके से जानता है। कुछ लोग सिंगर, कंपोजर, परफॉर्मर, बट एक असली सलीम मर्चेंट अंदर एक अंदर असली सलीम मर्चेंट है। वो असली सलीम मर्चेंट कौन है? वो ना तो सिंगर हो सकता है, ना वो कंपोजर हो सकता है, ना वो एक हस्बैंड हो सकता है, ना वो एक फादर हो सकता है, ना वो एक दोस्त हो सकता है। वो एक स्टूडेंट है और मैं हमेशा, जैसे कि मैंने जस्ट एक सेकंड पहले कहा कि मैं आई लव टू लर्न, सो आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ और म्यूज़िक का तो मैं बिल्कुल ही स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत शौक है कुछ भी नया म्यूज़िक सुन के सीखना। आई कीप सेइंग दैट म्यूज़िक इज़ 50% लर्निंग एंड 50% लिसनिंग। आप तालीम लेके सीख के बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन
सुनने से जो आपको तालीम मिलती है वो भी एक उसकी एक अलग खुशबू है, उसकी अलग अलग अहमियत है. And that is very important for every musician to keep growing, keep learning. And I'm addicted to that stuff, Tarsim. I'm very addicted to learning. हर एक concert, हर एक recording, हर एक song, हर एक film, I learn a lot. Teaches me a lot. I think it's one of the nicest addiction anybody can have. Absolutely. So, congratulations. Good Thank you. And you too. Because you are pretty much the same. आप उन कुछ लोगों में से हो जिनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है. और रिलेशनशिप सिर्फ आर्टिस्टों से नहीं है कि आर्टिस्ट जो आपका काम है कि फिल्म मेकर से हो या किसी ब्रांड से हो, आपको वेंडर्स भी याद रहते हैं, आपको क्लाइंट्स भी याद रहते हैं, क्लाइंट्स के यहाँ काम करने वाले लोग भी याद रहते हैं. जब आप किसी रूम में जाते हो तो यू मेक इट अ पॉइंट दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सको. यू नो, दैट्स ऑल्सो समथिंग इनक्रेडिबल व्हिच यू हैव. मैं इसका श्रेय एक्चुअली दूंगा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को, जो हमारे उस्ताद है. I've learned a lot from him. I've worked with a lot with him. And I've seen him. And I've always, as a child, wanted to be like him. It's impossible to be like him for the kind of human being and musician he is. But one can try. And I've always tried to be like him. And I've noticed him, how he's so humble. Musicians बहुत मैंने देखे और बहुत कमाल के musicians देखे और बहुत सारे amazing artists देखे. मैंने एक चीज़ सीखा है ज़िंदगी में कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी होता है. Because वो ultimately आपको एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाता है. True. और बहुत लोग आते जाते हैं और यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट बी कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, पैर जमीन पर, सर नीचे, एंड जस्ट बी सिंपल एंड हम्बल. Well said. सलीम, जैसे हम लोग किसी की भी कहानी सुनते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी बार इंटरव्यूज हुए हैं, विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है, एंड यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल. तो ज़्यादातर लोग बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं. पहली फिल्म, यू नो, किसने कैसे काम शुरू किया, कितनी फिल्में की है, ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है. लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को पीछे से देखो ना, तो हमेशा कुछ कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक में आती है. कि अगर मैं बोलूँ कि पूरी लाइफ की जर्नी से सबसे इम्पॉर्टेंट सीख क्या क्या मिली आपको, जो सीख आपके साथ हमेशा रहती है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, व्हाट विल बी दोज लर्निंग्स फ्रॉम योर लाइफ एंड करियर? Wow, that's a very elaborate question. There have been some events in my life. I would say one was FIFA World Cup. We got invited to play in 2010. In South Africa. South Africa. That was, you know, because मैं studio musician था यार Tarsim. I was never interested in doing anything live. I was very happy eating in my studio, like 5 meals. You know, I love food. Me and Suleiman were just in the studio, making music, doing films after films, scores after scores. सुबह 4-5 बजे पैकअप होता था. Used to go sleep आराम से. I'm thinking of what I've done while sleeping. Waking up to a new idea. Like I'm dying to go to the studio as soon as I wake up. तो ये atmosphere में Neera was crazy about us doing live. बहुत सारी फिल्में आ चुकी थी, कुर्बान, आजा नचले, फैशन, ऑफ कोर्स डोर, इकबाल, रब ने बना दी जोड़ी भी आ गई थी, सब गाने, चक दे इंडिया आ गई थी. एंड ही वाज ऑलवेज, एवरी रिलीज के बाद नीरव वुड से सर लाइव करते. आई वुड शट हिम डाउन. आई एम लाइक नहीं, मैं बहुत खुश हूँ स्टूडियो में. 2010 में आई सडनली वाज ऑन like TV because of Indian Idol. Yes. And we also released a movie called Bandwaja Barat, जिसका एक गाना बहुत मशहूर हो गया था, जो मैं नहीं गाने वाला था. बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स मेरे दिमाग में थे कि ऐसा, like this should be a Punjabi song, a Punjabi singer singing it. But अमिताभ ने गाना लिखा था, the producer director, everyone pushed me to sing it. मैंने obviously scratch गाया था, but final की तरह नहीं गाया था. मैं final की तरह गाया. रणवीर की पहली फिल्म थी. You know, everything just fell into place. The song sounded decent, sounded good to me, because I was very shy of singing. I'm like, नहीं, ये मैं नहीं गा सकता हूँ, नहीं, we'll get someone else to sing, get someone else. ऐसे करते करते मैं हमेशा टालता था. पर ये गाना रिलीज हुआ मेरी आवाज में. 2010 में इंडियन आइडल आया और फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ. अब फीफा वर्ल्ड कप में मैं 90,000 लोगों को साउथ अफ्रीका में देखकर, हमने एक गाना किया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए.
वो गाना हमने वहाँ पे परफॉर्म करने का हमको मौका मिला. And bro, I saw मैंने तिरंगा देखा वहाँ पे. India didn't participate in FIFA World Cup, but it did participate because we were part of the opening concert. और मुझे वो देख के इतनी खुशी हुई, इतना I felt so proud, इतना गर्व महसूस हुआ कि इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, you know. And we just came for one track, that's it. But that nasha of seeing 90,000 people in the stadium in South Africa killed me. I'm like, yaar, ye to kuch aur hi energy hai yaar. True. I came back, I said, Neerav, let's go. Let's start booking. बस उसके बाद रुकना नहीं था यार. We were just, you know, suddenly there's a new chapter in our life and Salim Sulaiman life started in a massive way. And I've just come to your podcast from a show. And I'm going back again tomorrow on the road. My studio time is now divided big time. Matlab, I'm mostly doing live and then, you know, doing very less studio time. As a result, I'm doing less movies. Of course, I'm really pushing a lot of time and energy for my label, Merchant Records. And, you know, we're doing some interesting stuff there. But yeah, I mean, this has been, you know, the studio journey. I still feel I miss my studio most of the time. But, you know, there are only 24 hours in the day. And if I'm doing 85 concerts in a year. So should I take away from this that कि आप जिंदगी से आपने ये सीखा है कि आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, एनर्जी में रहना चाहिए. काम कहाँ कर रहा हूँ तारसेन? मैं तो छुट्टी पे हूँ पिछले 32 साल से. काम है. You're just really blessed. ये अपनी साधना है म्यूजिक तो. काम किसने कहा है? I never feel I'm working at all. तो आप अपने पूरे काम को एंजॉय करते हो, पूरे प्रोसेस को एंजॉय. अंडरस्टेटमेंट. I mean, like मैं तो छुट्टी पे हूँ यार भाई. I'm really having a great time. मतलब this is a dream come true. I never thought that I'm going to live a life like this. एक्चुअली सलीम, हम लोग जनरली जब पॉडकास्ट शूट करते हैं ना, हम पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ लर्निंग और फिर हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि हमको ना आज हम थोड़ा उल्टा करते हैं, पॉडकास्ट थोड़ा चेंज करते हैं. कल हमने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, आस्क द गेस्ट, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे. तो मेरे ख्याल से उन क्वेश्चंस का जवाब करते करते हम बहुत सारी बातें कर पाएंगे, और जितने भी लोगों ने सवाल पूछे उन लोगों के सवाल भी जवाब दे पाएंगे. करेक्ट? दैट वर्क्स फॉर यू? Of course. Everything works. This we are doing for the first time though. Wow. पहला सवाल है कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल्स बनाए हैं, लाइक डांसिंग जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, एंड फैटल अट्रैक्शन, लेडीज वर्सेस रिकी बहल. Both of these are my personal favorite. On similar grounds, could you please consider making a new album or release fresh singles which are just instrumental music with no lyrics? Oh, that's a fantastic idea. It's so amazing, you know. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि audience ना just knows you the best. Especially आपके जो listeners हैं, आप जो भी कुछ हो, you are who you are because of your listeners. It's so true. You know, I mean, your fans and listeners are your extended family, and they really know you, and they, because you know, आज म्यूजिक आप बनाते हो, अगर आपको वो प्यार नहीं मिलता आपके लिसनर्स से, तो मतलब जिंदगी अधूरी लगती है. यू नो दैट यू फील लाइक ठीक है, आपको गाना पसंद आया, आपने रिलीज किया, बट जब फैंस लिसनर्स से पसंद करते हैं ना, it's like wow, you know, you get that validity from your peeps. It's incredible. So thank you for saying that, because this thing occurred to me just a month ago. मैं you know कुछ हमारे ही गाने चलते रहते थे प्लेन में, हम लोग बहुत ट्रैवल करते. So I listen to a lot of instrumentals in the aircraft. Sometimes I listen to it, and some of our songs like रब ने बना दी जोड़ी and a very popular album के instrumentals बहुत जगह मैंने सुने, malls में, यहाँ वहाँ. So it's always caught on to me that yeah, I should, you know, some of our popular songs from Bhumi, our project, I should make derivatives of that, and not just lo-fi mixes, and you know, not just you know, like banging remixes or you know, club mixes or whatever, but I should make instrumentals too, because they are like beautiful melodies. Yeah. I remember there was a time, मतलब हम छोटे थे, Jayanti Honey, it used to be very famous. Instrumental was a very big market. Big thing. It still is actually. Yeah. It still is. Some of the popular songs have you know,
they're still popular because they're alive for their instrumental versions. True. Good suggestion. All the best. Great one. Hope to see this soon. You often give background score in the movies too. Sometimes music writer अलग है जो म्यूजिक कर रहा है और आप स्कोर कर रहे हो. डायनेमिक्स और प्रोसेस क्या है इस सिनेरियो में, और क्या ये हर्टफुल है पर्सनल लेवल पे कि आप दोनों नहीं कर रहे हो? अच्छा सवाल है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तारसे में. आर्ट बैकग्राउंड स्कोर एक स्पेशल आर्ट फॉर्म है. उसकी सोच, उसकी समझ, वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब अलग सोच है. टू अंडरस्टैंड सिनेमा, टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, टू अंडरस्टैंड स्क्रीन प्ले. A lot of people, everybody knows where to do music. But people who are experienced to do background scores, they know where not to do music. That's very important. Music has even silence is music. So with that funda, it's important to shut up and not do music when you have a great scene and the actor is taking it. ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने म्यूजिक किया है कोई सीन के लिए और फिर हमने बंद कर दिया वो म्यूजिक. It takes guts to do that. And when you listen to the actor, especially when you have a good actor, doing the scene, you sometimes don't need the music. If you have good, sound, like, whatever background noise and sound and stuff, you have good effects and stuff, you don't need music. Music sometimes, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. हमने एक फिल्म की थी भूत. It was उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अप्रिशिएट हुआ था, पर बैकग्राउंड स्कोर से ज़्यादा उसके जो इफेक्ट्स थे वो अप्रिशिएट होते, जो बैंग्स थे और जो व्हाटएवर. आई एम टेलिंग यू दिस एज अ कंपोजर. हमने पूरा बैकग्राउंड स्कोर किया था फिल्म में, एंड देन 60% ऑफ द म्यूजिक हमने निकाला उसको. 60%? वी रिमूव द म्यूजिक. अब ऑब्वियसली व्हेन उर्मिला मातोंडकर इज वॉकिंग अप द स्टेयर्स, हम म्यूजिक कर रहे हो, बट व्हेन यू डोंट हैव म्यूजिक and you have just effects and like a little bit of light thunder and crickets and stuff, and suddenly you see Manjeet, that impact is only felt when there's silence before that. Any kind of background score, whether it's dramatic, it's romantic or whatever. There was a scene in Ladies vs. Vicky Bal where Ranveer and Anushka have a very intimate moment, and when they have that intimate moment, we actually didn't play any music. That intimacy got magnified because there was absolute silence. Well said. Silence is very, very, very impactful. And a lot of musicians, a lot of score producers sometimes miss that. I don't always blame them. It's also the director's sensibility and the producers. But I think as a composer, you have to push. And director को बोलना है यार कि यार ये scene बहुत अच्छा है. Like, let's not put any music here. डायरेक्टर का भी हौसला बढ़ जाता है उसमें. हाँ यार मैंने अच्छा सीन किया. बट जोक्स अपार्ट, द सीन रियली समटाइम्स डजंट ऑलवेज नीड म्यूजिक. एंड एज अ स्कोर प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, इट्स योर ड्यूटी टू पुश दैट कि यार नो, ये सीन कमाल है, ये एक्टिंग कमाल है, ये स्क्रीन प्ले होल्ड कर रहा है, लेट्स नॉट पुट म्यूजिक हियर. इफ द सीन डजंट रिक्वायर, यू डोंट नीड टू. सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी सोच है, एक स्टडी है, that's a different thing altogether. And I've obviously, Sulaiman and me have studied score just by experience. We've watched a lot of films and we've done a lot of movies as background score composers, and we've learned every film. Every project has been a learning experience. So that's something... तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा आदमी म्यूजिक भी करता है? जरा भी नहीं. दो अलग अलग चीजें. दो अलग अलग चीजें. और मेरे हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा मुश्किल है. कोई मुझे अप्रोच करता है, बहुत सारी फिल्में हम लोग गाने नहीं करते, बैकग्राउंड करते सिर्फ. वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे पास आते कि यार गाने तो इसने कर लिए, कभी मल्टीपल होता है, कभी कुछ व्हाटएवर, बैकग्राउंड आपका चाह रहे. Fine, it's cool. I have no ego as such that, because in my opinion, background score, cinema, lover really respects background score much more. It enhances the whole experience, changes. Indeed, and it requires a different sort of skill set. और आपने जो बात बोली ना, आपकी बात मैं सुनते सुनते ना काफी चीजों से रिलेट कर रहा था. एक्चुअली वो सिंपल सी बात में बहुत बड़ा मीनिंग है.
आपने बोला ना कि कहीं कहीं साइलेंस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये हर चीज़ में है। जब गायकी की भी लोग बात करते हैं तो गाने से के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको सांस कहाँ लेनी है, चुप कहाँ होना है। और ज़िंदगी में भी बोलना सीखना जितना ज़रूरी है, चुप रहना सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये हर जगह अप्लाई होता है। एब्सोल्युटली, सो वेल सेड। मैंने ये सोचा नहीं था कि हाउ लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग समटाइम्स। करेक्ट। मेरे को रिसेंटली किसी ने ये बात बताई थी कि अगर आपको अच्छा बोलना है तो सबसे पहले अच्छा सुनना सीखो, हाँ, बिल्कुल। तभी। तो आई थिंक ये हर जगह अप्लाई होता है। इट्स डीप थिंग। एनी सॉन्ग्स ऑफ एनी अदर म्यूजिक राइटर्स यू विश यू हैड कंपोज्ड? चुपके से ए.आर. रहमान, ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत सारे गाने हैं। जो भेजी थी दुआ, विशाल विशाल शेखर। शेखर। There are many songs of Pritam. कभी जो बादल, शारिब तोशी। मिथुन के बहुत गाने हैं। कभी तुम ही हो, that's one famous song, but many other songs that he's done, very nice. So many composers, यार। अमित त्रिवेदी, really good. That's one of his most famous songs, but even London to Makara, that's a beautiful song also, very fun. बहुत सारे गाने हैं. So many composers, यार, they're extremely तो आप talented. करते तो कुछ अलग करते। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं एवी बना देता उसको. So it's good I didn't. Actually, some songs सब have- अलग-अलग हाँ, सबका some अलग songs है। have they are popular because of their own identity, which is मुझे एक्चुअली किसी और ने ये भी बात बोली थी कि व्हाट इफ क्वेश्चन ही गलत है, कि ये नहीं होता तो ये होता। हाँ। वो जो हो गया वो बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। पास्ट में जाके कुछ बदलता नहीं है, फ्यूचर में बदलेंगे इंस्पायर होके उन चीज़ों से। तो बिल्कुल। राइट थिंग। ओके, आई सॉ यू ईयर्स अगो इन मेरी याद रखना बाय अदनान सामी। Oh, That's one of my favorite songs. Nice. Could you please consider working with him again for a few songs? I have no problems at all. I even today, if somebody comes to me and says, "Yeah, we want you to produce our album," I'll really consider it if the songs are good, यार. अदनान के साथ काम करने में we had a lot of fun. First of all, we are great friends. We're very close as people. और ना केवल वो एल्बम तेरा चेहरा, but we did the next one also, which was called कसम. And then of course he did a lot of movies also. उसके काफी सारे soundtracks के arrangements भी हमने किए थे. That song also we did. Many songs of that album. लिफ्ट करा दे was also? Lift Kara De was from the earlier album. Kabhi To Nazar Milao. It was in that album. We didn't do that. No. 1 sec. Yeah, we did that song. Of course, Lift Kara De was. It was from Tera Chehra. Yeah. We did that. Yeah. मुझे लग रहा था। I'm sorry. We've done so many songs with him that. तो जिन्होंने भी सवाल पूछा है उनका जवाब ये है कि ही इज मोर देन हैप्पी टू डू इट। आप एक काम करो, अदनान सर को मैसेज करो। हाँ। और उनको बोलो कि सलीम जी तैयार है, फटाफट प्रोजेक्ट लेके आए। ये बोलने की जरूरत नहीं है. Adnan knows that anyway. Yeah. अगला सवाल है कि आपका गाना कंपोज करने का प्रोसेस क्या है? क्या आप हमेशा ओरिजिनल थॉट पे अटकते हैं जब कॉम्पोजिशन बनाते हैं? ऐसा कोई प्रोसेस वो नहीं है, सेटअप नहीं है. कभी कभार एक दिमाग में एक वर्ड आ जाता है. जैसे आधा इश्क एक वर्ड आया था. एंड देन आई सजेस्टेड कि आधा इश्क आधा है, आधा हो जाएगा. थोड़ा कम है मगर ज्यादा हो जाएगा. And Amitabh really liked it and he said कि यार this is so good, but then Manish didn't like it, and so a lot of things happen like that. मेरे दिमाग में एक phrase हमेशा, I love the word मर जावा. So मर जावा तेरे इश्क में मर जावा. ऐसा एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी. So I thought about that and I made a song out of it. But आगे क्या करना था वो फिर इरफान सिद्दीकी the writer wrote it. I mean I composed the melody. So कई बार कुछ phrases दिमाग में आ जाते हैं. And then आ जाती है, मतलब हाँ, जैसे हमने हाल ही में एक गाना किया था फभूमि. मुझे
एक वर्ड आया था दिमाग में कि मंजूर है, तेरी सभी शर्तें मंजूर है, तेरा फैसला मंजूर है, तेरा ये मंजूर है, वो मंजूर है. And we made the song, and Arman and me had spoken about like doing like a qawwali kind of a song, a pop qawwali, and then like a simple like a ballad pop song with like a qawwali touch to it, like a Sufi touch to it. And then I called Shraddha and I said, look, I have this word manzoor hai, and she wrote the song. So ऐसे सब there is like कभी कभार word से आता है, कभी कभार एक धुन आ जाती है दिमाग में. And जैसे I had this tune in my head, and कुछ ऐसी धुन आई थी कि रोके हवा रोके घटा. बहुत गंदे शब्द थे, बट ऐसे लिखने के लिए कुछ रफ वर्ड्स थे. कर लिया. फिर उसको मीर अली हुसैन ने लिखा कि ये हौसला कैसे झुके. उसने लिखा था ये सर हौसलों से कैसे झुके. सो ये सर हौसलों से, एक तो हौसलों वर्ड अच्छा नहीं था. सर can we make ye hausla sounded better. So I'm like, okay, so this way there's a process. Sometimes I make a tune and एक बार हम रॉकेट सिंह पर कर रहे थे एक फिल्म, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर. उसमें जयदीप ने गाना लिख लिया था, पंखों को हवा जरा सी लगने दो. तो वो लाइन ऑलरेडी सेट हो चुकी थी. So he had written the whole song and then he gave us the song and then we composed on it. So there's no fixed process. कई कबार कुछ डायनामिक, हाँ, धुन से शुरुआत कुछ होती है, कुछ वर्ड से शुरुआत होते हैं, कुछ पूरे गाने की लिरिक्स आ जाती है सामने और फिर उसको डेवलप ट्यून में हो जाता है. वो तो आपने एक्चुअली एक और स्टोरी बहुत बार बताई है बट मेरी फेवरेट है. मैं ऑल अबाउट म्यूजिक में जब आपसे बात कर रहा था तो आपने कुछ करिए वाली बात बताई थी कि आदि सर पूछ रहे थे कि यार कुछ करो, तो बोला ठीक है लिखते हैं, कुछ करिए. Yeah, that was mad. I mean, actually, that film Chak De, I remember everything about it because वो film हम छोड़ने वाले थे. 4-5 attempts हमने कर लिए थे वो टाइटल सॉन्ग के, जो नाकामयाब रहे. We failed, and I had come to a point where I told Sulaiman, यार we should leave this film because if we can't do justice to it, we should not do it because it's a very good film. And we don't want to do like, a bad song. Because whatever we do, the director's not liking, the producer's not liking. Sometimes we are making a song which we ourselves don't like. So let's not do it. So he said, yeah. But Salim, let's try. Let's keep कुछ करते. तो मैंने एक दिन, मैं तंग आ गया था, मैंने जयदीप को बुलाया. मैंने बोला, जयदीप यार, तू आ, कुछ कर. तो वो आते ही वो पहला वर्ड लिखा, कुछ करिए. अब ये गाने के पहले लिखने के पहले मुझे आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि यार सलीम, आई वांट इतना हम लोग सब वो हो चुके थे मतलब वी वर सो वी हैड गिवन अप होप्स कि यार ये गाना बनेगा भी कि क्या. तो मैंने आदित्य चोपड़ा को पूछ लिया था कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट. या ही सेड सलीम, आई वांट अ जुम्मा चुम्मा. सो आई एम लाइक, आर यू सीरियस, लाइक जुम्मा चुम्मा. इसी नहीं, मतलब इंडिया जब भी कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो चेस हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, एनी स्पोर्ट हो, वो एक चांट की तरह वो गाना चक दे इंडिया, जुम्मा चुम्मा दे दे. मैं बोला, आर यू सीरियस? He said, no, but I want this kind of a popular hook. जुम्मा चुम्मा. तो उसने इस तरह से गाया, चक दे इंडिया. I said, okay, stop. I went back, I said, ये तो अच्छा है कि हमने जितने भी गाने बनाए थे ना, we made it like चक दे इंडिया, ऐसा कुछ चक दे एक ही बार यूज किया था. पर ये जुम्मा चुम्मा का जो एग्जाम्पल दिया उसने ना, he sang चक दे twice. So I said, hey, this is a good thing. चक दे, ये अच्छा है. तो उस लॉजिक से मैंने उसको बोला कि यार ये कुछ करिए, तो एक बार लिखा ना, उसको और एक बार लिख दे. कुछ करिए, something, कुछ करिए. So we actually wrote कुछ करिए, नस नस मेरी खौले, कुछ करिए. So I was like, okay, now this is getting somewhere. And then we sat down on the piano and I played something and he's like, okay, this is sounding nice. It's got some
melody, it's got some emotions. Then I was like, let's repeat this कुछ करिए यार, it's good, you know. बस बस बड़ा बोले अब कुछ इस तरह से करते 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 इसका मुखड़ा बना. And then I knew that I'm going to land into somewhere into चक दे. I knew I was going to go there. क्योंकि वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट था कि ऐसा डबल यूज करेंगे चक दे. बस यार एक शाम की बात थी. सुखी lives in Juhu only where my studio is. Called him. आया, बहुत मजेदार है यार गाना, ये हौसला बढ़ गया. सुखी और मेरा रिश्ता बहुत we are very like thick, you know, lots of songs he sung, Fashion का जलवा, हौले हौले, many songs he had sung which had become popular also. एक दोस्ती थी, एक रिश्ता है, एक respect है. So he put in a lot of, you know, effort and, you know, he sang scale थोड़ा ऊपर करते हैं, मजा आएगा, एक मिट्टी की बात आएंगी. करते करते हमने इसका एक शुरुआत का एक मुखड़ा बना दिया. And I felt good. I heard it and I'm like, okay, this is sounding good. I think we have something. जब खुद को ऐसा वो लगने लगता है ना, तो most of the time you know that, you know, the song is going to sail through. And obviously we were very fortunate. India won the World Cup with South Africa. Picture, of course, लोगों ने बहुत appreciate की. ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है. Timing of the film also is very important. और कभी-कभी the most iconic works are done like that. लोगों को लगता है पता नहीं क्या होता होगा, but it's like there is no right process or wrong process. There is no formula, nothing like that. मेहनत के साथ किस्मत का भी बड़ा खेल होता है यार. इनफैक्ट आपने एक और बताया था कि मौला मेरे ले ले मेरी जान भी कुछ और गाना था, डोर में था. नागेश्वर को शायद वो था. एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें हैं तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर. हमने सिर्फ डोर ऐसा ही एक वर्ड था, टाइटल ट्रैक के हिसाब से इसको बनाया था. एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर. नागेश को ये गाना बहुत सैड लगा. ये ऑलमोस्ट सेड कि यार इट्स रोना आ रहा है मुझे. I want a positive song. I want a song with a lot of inspiration, a lot of, you know. I said, okay. So that's how Ye Hausla happened, you know. It was a travel song, and we came up with that. So I had this song with me. When Chak De, we watched Chak De, there was no Maula Mere. India wins the World Cup. The girls are rejoicing in the film, and Shah Rukh is looking at the Tiranga, and he's got tears in his eyes. It was a background score moment. And then it cuts to the mohalla, where uska wo gaddar दीवार पे कोई लिख दिया होता, तो वो मोहल्ले में अपनी माँ को ले जाता है वापस. तो वो पूरा सीन था, और वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था, और अच्छा था. यश जी called us after seeing the movie. There was 1 week to release. एक हफ्ता था सिर्फ रिलीज को. We were watching the cast and crew trial. पिक्चर हो चुकी थी, एक हफ्ता था. He said, I want a song here. I'm like, एक हफ्ते में कैसे हो? अब एक हफ्ता रिलीज को है, मतलब गाना हमें उसी रात को करना था. We went back to the studio. Me, Jaideep, Sulaiman, Aditya Chopra came a little bit later. Shimit, the director. I said, look, I have a song. इतना जल्दी तो बनने से रहा, but I have this song. I sang it to लिखने लग गया वो. तीजा तेरा रंग था मैं. उसकी पहली लाइन ही इतनी जोरदार थी ना. I'm like, wow, बात है यार. Everyone was so charged up. Picture हमने ताजी देखी थी, and we just came to the studio, and it just happened. I had this melody which I had done for Noor, so it was there in our hard drive. We just pulled up the session and we, you know, muted the vocals and I started singing. amazing. And that's how it happened. It just happened that very night, and we had a song in 24 hours. So. And again, both these songs are, all the 3 songs we are discussing, all 3 are iconic songs. You know, sometimes Tarsem, things happen because it's just meant to be. अपने हाथ में नहीं होता. ये इसमें जरूर एक कुदरत का एक खेल है, इसमें you know, किस्मत की बात है. कई बार मेहनत करते कुछ चीजें नहीं बनती, कुछ चीज ऐसे ही बन जाती है. So music में it's definitely a blessing for sure. You know, it doesn't just work like that. That it's there is a magical thing going on there.
तो मुझे आपसे एक मतलब एडिशनल क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे नागेश सर ने बोला कि ये बहुत सैड है ट्यून, गाना जब रिजेक्ट होता है, रेगुलरली रिजेक्ट तो होता ही है, नहीं रेगुलरली रिजेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं। रिजेक्ट इन द सेंस हाउ डू से कि कभी बाउंस होता है, कुछ नया आप बना के देते हो। आजकल ऐसा होता है कि इसका एक ऑप्शन सुन सकते हैं तो ये पहले नहीं होता था ये, बाय द वे। नहीं, बट शुरुआत में जब पहली बार आपका गाना ऐसा कुछ हुआ था, तो वर यू कंफर्टेबल विद दिस फीलिंग? और लुक, आई ऑलवेज फील द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। उसको अपनी फिल्म सबसे ज्यादा बेहतर पसंद पता है, एंड ही नोज द स्क्रीन प्ले, ही नोज द कैरेक्टर्स। व्हेन इट कम्स टू नागेश, तो वो खुद एक राइटर है, ही इज अ राइटर डायरेक्टर, एंड यू नो he knew his, we had already worked with him on Iqbal इसके पहले, and तीन दीवारें, and Hyderabad Blues। तो फिल्में हम कर चुके थे उनके साथ, and of course there was a relationship, there was a lot of love and respect for each other। and when he rejected ये हौसला, I mean when he rejected मौला मेरे टूटे ना ये डोर, I understood what he's trying to say। He said, you know what, it's a very sad moment in the film anyway, we want to juxtapose this and we want to create a travel moment here। I said, okay, we have a point। I'm only asking this क्योंकि होता क्या है कि जब हम नया नया काम शुरू करते हैं, और जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हज़ारों म्यूजिशियन है जिनको लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, और उस टाइम ना सिर्फ एटीट्यूड ही काम आता है आपका। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप मूव ऑन करोगे, दूसरा काम करने लग जाओगे। कभी कभी ना आदमी फंस जाता है कि यार मेरा काम अच्छा नहीं है क्या, क्यों पसंद नहीं आया यार, यू नो। यार ये लाइन भी जयदीप ने लिखी है, बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, उड़ने दो उड़ने दो उड़ने दो। You gotta, you know, if you don't, this is, everything is an experience, everything, you have to take it as it, that it's a process। Correct। It's always the journey and not the destination, always। And you got to celebrate that, you got to enjoy that, there's always a learning from it। And it's beautiful। Music is a piece of art। You can never take it as a task। You know, the minute you start taking it as a task, it's game over। बहुत सारे लोग ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं। पहले एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होती थी कंपोजर और डायरेक्टर के बीच। एक सिचुएशन होता था, एक गाने का सिचुएशन होता था, एक बैकग्राउंड मोमेंट होता था, कंपोजर गाना बनाता था, डायरेक्टर को पसंद आता था, शायद नहीं आता था। अब तो बोलने वाले भी 6 हो गए ना, लेबल्स है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, लेबल है, प्लेटफॉर्म है, OTT है। There are lots of, I mean, I won't tell you one project that we did। We finished that song। It was for a very, very big OTT। We did that song। It was done। गाना मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना। मैंने जब डायरेक्टर को सुनाया, उसने कहा नहीं यार मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा फोक करते क्या। बोला ठीक है, तो हमने चेंज किया उसको। मैंने उसको वो सुनाया, वो उसको पसंद आ गया। उसने आगे प्रोड्यूसर को सुनाया, प्रोड्यूसर को भी पसंद आ गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते यार इसको इधर उधर। बोला ठीक है। फिर एक्टर के पास गया, बोला अरे, फिर एक्टर ने सुना, एक्टर ने सजेस्ट किया कि यार ये करना चाहिए थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है, वो किया हमने। Then it went to the platform, the OTT। I'm like, are you serious? OTT did some suggestions of some changes। I'm like, okay, I did that। It went to the choreographer। The choreographer told me, Sareem, I know your sound, this is not you। Well, are you nuts? It is me। What's wrong with you? I know, I've worked with a choreographer many times। उसने कहा कि नहीं यार, is this your first draft? I said, no, it's not my first draft। Can you send me the first draft? I sent the first draft। She said, this is the song। She convinced everyone in the chain। So ये होता है। अब इससे हुआ क्या कि obviously मेरे पसंद का जो पहला मेरा ड्राफ्ट था वो जा चुका आगे। It went ahead। But we wasted a lot of time, money, energies, too much, you know, because there's so many people talking and like, you know, deciding what should be there। मेरे को बहुत सारे सिंगर्स और कंपोजर्स ना गाना सुनाते, तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि देखो भाई, पहली बात, मैंने जीवन में आज तक कोई भी गाना सिलेक्ट करके हिट नहीं किया, तो मेरा ना बनता ही नहीं है व्यू। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ
ठीक है, कि मुझे कैसा लगा एज एन ऑडियंस, बट इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, बट मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता है। दूसरी बात, जब कोई ज़्यादा लोग फीडबैक देते हैं तो मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता, कि भाई तुम ये जो फीडबैक दे रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में कितने गानों को हिट करवाया है? बिल्कुल, क्योंकि क्रिएटिविटी को आप बांध ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। जिनको भी गानों के म्यूजिक के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो डेटा स्टडी करते, और फिर एक म्यूजिशियन आता है जो सारे डेटा को झुटला देता है, और फिर लोग उसको स्टडी करने लग जाते हैं। तो हर 2 साल, 6 महीने, 3 महीने में गाना हिट होता है। लोग समझते हैं कि गाना क्यों हिट हुआ, उसका फॉर्मूला ढूंढो, कि पहले 5 सेकंड में ये हुआ, ये साउंड आई, लिरिक्स ऐसा था, डबल बार बोला। बट सच्चाई ये है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। बिल्कुल, जब हम लोग शुक्राना जब मैंने बनाया था, तभी कोई एल्गोरिदम नहीं था यार। करेक्ट। जब हमने रब ने बना दी जोड़ी के गाने हम कर रहे थे, तभी कुछ हम लोग देख ही नहीं रहे थे कि स्ट्रीमिंग, एल्गो, फॉलोअर्स, likes. Are you mad? And I think a lot of this data is, I think one of your this is one of your like topics of All About Music, which happened 2 years ago, and I was part of that panel. And I said, like, data cannot. I mean, see, look at YouTube. A lot of you can buy Google ads. You can, kind of. Instagram ads, Reels, you can do things. You can't put this thing to it. Like, okay, this is a song that's trending. This is a song. I mean, it has to be a good song ultimately. True. That's very, very important. आप कितना भी पैसा marketing में डाल दो उसके, आपको मतलब till the song is not liked by the audience, there's not much you can do. मार्केटिंग सिर्फ आपकी रीच बढ़ा सकती है, Absolutely. गाना हिट नहीं कर सकती। Very important. गाना तो दिल पे छुएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छा गाना हो, क्वर्की हो, उसकी बीट कमाल हो, आवाज में कुछ एक नयापन हो, there are lots of reasons why the song becomes a big hit. And a lot of people think, अरे यार ये लोग ने तो रील्स पे बहुत पैसे मार्केटिंग में डाले यार, बहुत डाले हो गए, लेकिन बहुत सारे गाने उस वजह से नहीं चलते हैं। मार्केटिंग के बावजूद गाने नहीं चलते जब तक लोगों को पसंद नहीं आते। इसका सीन क्या है ना, क्योंकि मैं आज जैसे स्टूडेंट वाली बात कर रहे थे ना, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी कभी 100 में से कोई एक गाना ना बार बार सुनाने के चक्कर में हिट हो जाता है, 100 में से एक। लेकिन होता क्या है, जो लोग फॉर्मूला में विश्वास रखते हैं ना, वो उसी को पकड़ के बातें करने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि और बहुत सारे लोगों ने उतनी ही मार्केटिंग की, उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, लेकिन गाना हिट नहीं हुआ। तो वो जो एक किस्मत से चलता है ना, वो फॉर्मूला नहीं है। Absolutely. किस्मत अच्छी है तो कुछ भी चल जाएगा, घर पे बैठे बैठे भी गाना चल जाएगा। बट अगर आपने उसको फॉलो करके वापस चालू किया तो नहीं चलता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि यार ये सिंगर तो गा भी नहीं सकता, इसके गाने क्यों चल गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गाने चल जाते हैं, कुछ के गाने, बट वो गानों में कुछ चीजें होती है जो लोगों को छूती है। You cannot deny the fact that if people like a song, they like a song. They like a song. It's done. They just either like it or don't like it. Bas, There's no third thing. Exactly. Yeah. So these days are thinking कि यार इसकी streams कमाल है यार, इसकी Spotify की following बहुत अच्छी है। आवाज तो सुन लो यार बंदे की पहले, ये बंदी की। You should like the singer first of all before I mean, it's a piece of art that you've written, you've composed. Go with a singer, a voice first, and then check his streamings at the back. Don't check his streams and his following and then cast him. That's not cool. As an artist, you can't keep thinking of numbers and can't keep thinking of streams. And आप streams इसके बढ़ेंगे वो सोच के आप गाना बनाओगे तो कभी नहीं बनेगा यार. You got to just write a beautiful melody and like it yourself. If you like it, there's a huge chance that people will like it. But if you don't like it, then असल में मामला गड़बड़ है. आपने एक मुझे वर्ड सिखाया था, म्यूजिक इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, कम्युनिटी. जी. तो म्यूजिक कम्युनिटी क्या है कि अब बिजनेस है और क्रिएटिविटी है. मेरे ख्याल से वो सही बैलेंस होना जरूरी है. Creative people need to collaborate with each other. Yeah. It's good to like be there for them, but you can't be putting them in a prison. It's good to guard them, but you can't cage them. True. It's important for everyone to know that, because
There are a lot of artists, one belongs to one label, the other artist belongs to other label. Arey, we can't collaborate because I'm on this label. I said, West doesn't have this formula. People they just collaborate, write a song, and let the publishing figure out what the splits are. And that's how it should be. So आपने एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक चढ़ा पब्लिशिंग. तो मुझे इस बारे में बहुत साल से बात करने, ऑफलाइन भी कभी बात नहीं की कि आपने फिल्मों का काम कम करना इसलिए शुरू किया कि यू वांटेड टू ओन द पब्लिशिंग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. 2012 में जब जावेद साहब ने हम सब के लिए अमेंडमेंट जो आया हमारा, जो चेंज हुआ अमेंडमेंट, फॉर द कॉपीराइट अमेंडमेंट, एंड जावेद साहब वाज सिंगल एट दैट टाइम. ही स्टूड for everyone at the Rajya Sabha and made that historic speech and changed things, changed the law. He amended the law. True. It was a big thing. We all needed to support him and support our community. And Sulaiman and me were I can proudly say that we were the front runners in that, and still are front runners in that. And I feel like, if somebody is trying to make this change for us and for our generations to come, the least we can do is, support that. So we were not fighting with any production house for whatever. We were just saying like, hey, the law has now changed. Let's also make those amendments in the agreements. It's only practical, right? But fortunately, agreement में कोई लिखे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, because Absolutely. अमेंडमेंट के हिसाब से अगर आपने अपनी कोई आपसे खरीद ही नहीं सकता है आर्टिस्ट शेयर. यार ये सब तो ये देखो क्या है कि then this is a Pandora's box, because legally if you sign against it, even though it's the law of the land, but what about your rights which are outside India? So it can be India can protect those rights or whatever, but now this is for a legal guy to tell you exactly what the repercussions are. In my head, and like you said, आप correct सही कह रहे हो कि yes, it's not, it's illegal. Even if you sign off your rights, it's illegal. Correct. So it's not true, yaar. We still kind of swayed our ways around it, and we tried to convince the production houses कि यार ये अभी change हो गया है. Let's just assign I don't it to think the IPRs. problem exists now. Now तो everybody is You'll be surprised. You'll be surprised. There's still a works for hire agreement every film. तो दो पार्ट है कॉपीराइट में, पब्लिशिंग है, एक आर्टिस्ट शेयर है. Yeah. तो आर्टिस्ट शेयर तो आपको मिलता ही है. वो तो IPRS से मिल ही जाता है. So वही आप पब्लिशिंग भी आप रखना चाहते हो, करेक्ट? Well, most of the cases, some people are genuine, and some have that heart. कि नहीं ठीक है, you keep one part of the publishing and stuff. But most of the cases, it's फिल्म not में अभी given. तक वो कल्चर शुरू हुआ नहीं है. नहीं हुआ है. Let's face it. OTT के साथ कुछ हुआ है. Very rare, bro. Very rare. Very rare. So I have done couple of deals, तो I know, but I'm very बहुत proud rarely. of you and good, happy that you've been able to swing it. But it's difficult. ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी अभी सावन कोटेचा आए थे. सावन कोटेचा इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग राइटर हु हैज एन इंडियन I know डिसेंट. of him. Yeah. तो उनसे मैंने समझा पहली बार कि यूएस में चलता कैसे है. तो उन्होंने समझाया कि यार जनरली कंपोजर्स जो मेलोडी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और लिखते हैं, हम सबको सॉन्ग राइटर बोलते हैं. तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल है, It's a writer's share, yeah. आर्टिस्ट है, सॉन्ग राइटर है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गिटार प्लेयर है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस गाने में बनाया, Truly. तो हम उनका भी एक सॉन्ग राइटर शेयर होता है. या कभी कोई एक ड्रमर है, तो जब हम काम करते हैं, और ये एक रिलेशनशिप भी है कि कभी कभी मैं ज़्यादा काम करता हूँ, वो काम इक्वली शेयर करते हैं, एक शेयरिंग डिफाइन हो जाती है. दैट बिकम्स द कॉपीराइट ऑफ द होल सॉन्ग. एंड जनरली क्रेडिट्स भी ज़्यादा नहीं मिलता है हमको, और हमको कोई पेमेंट भी नहीं मिलती है, बट वी ओन इट एंड नोबडी कैन बाय दिस पब्लिशिंग फ्रॉम अस. इवन इफ वी डू अ डील विद पब्लिशर, तो वो 20 साल 30 साल 40 साल एक लिमिट पीरियड है, उस पीरियड की डील होती है. उसके बाद वो पब्लिशिंग वापस हमारे पास आ जाती है. Absolutely. दैट्स हाउ इट वर्क्स. Of course. एंड आर्टिस्ट जो सिंगर हैं, जो फेस है, दे आर ऑलवेज विद द लेबल, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द यूएस, एंड दैट्स हाउ दे मेक मोस्ट ऑफ द मनी. Yeah. तो मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि फिल्म में ना भी आए, कम से कम नॉन फिल्म में हमारे देश में ये अगर शुरू हो जाए, और ये तभी होगा जब थोड़ा सा एजुकेशन होगा, Awareness and अवेयरनेस होगा. understanding हो जाएगी. And like I said, most importantly, Tarsim, the community spirit is very important.
if we start looking at all of us, like how we are all actually dependent on each other. हम सोचते हैं कि हम now I'm independent, like मेरा खुद का लेबल है, मैं खुद shows करता हूँ, मैं अपने गाने बनाता हूँ, ऐसा नहीं है. I am connected with you. Our forces are always entangled in some way or the other, and it should be. True. Because we are a community. It should be like that. That's how you grow as an artist, as an entrepreneur, as everything, as a human being. So that spirit is very important. थैंक यू. जिन्होंने भी सवाल पूछा था हमने सवाल के अराउंड बहुत सारे जवाब हो गए इसके. अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो रही है और अभी तो एआई भी आया है और कहीं डर भी लग रहा है, तो आने वाले समय के लिए प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर के लिए कुछ बताइए. हाउ इज गोना चेंज? इट्स जब मुझे याद है जब इंटरनेट आया था और जब कंप्यूटर्स आ गए थे ना, लोगों को ऐसा लगा था यार अब तो खत्म हो गया, ह्यूमंस आर गॉन नाउ. फिर computers started doing some crazy softwares which were again very scary, and people were against selection. Now we're done. It's over. Humans have a certain emotion, and the fact that they're not perfect will always keep us alive. AI has a certain kind of, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि if you use technology with soul, that's when things will go ahead. If you don't have soul, technology will start, fading. And that's always, I've seen this from the past 30 years. I started off as a keyboard player for a composer, and I was playing keys, and there was a tape recorder at that time. We had 8 tracks or 4 tracks in a film situation. It moved to 16 tracks. It moved to 32 tracks. And now this. So I've seen this change, Technology has never replaced humans, and so will AI. AI will never be able to. आप यूज करते हैं अभी? Of course मैं करता हूँ. क्या यूजेज होता है? मैं बताता हूँ मैं AI कैसे यूज करता हूँ. मैं कई बार कुछ गाने होते हैं जिसका मुझे गिटार रिफ बहुत पसंद आया है, तो मैं उसको through AI minus the guitar, which is AI can do that. It can split the instruments from a track. A stereo track, it just splits a particular thing and it removes it. It removes the vocals of a particular track sometimes, So that. Recently, I will not tell you which singer I got. I was composing a song and I have not worked with this female singer before. And I composed a song and I was like, यार ये इसकी आवाज में कैसे लगेगा यार. अब वो सिंगर के साथ मेरा ज़्यादा वो नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा we've not collaborated. I know her, but we've not worked together before. And she's quite a busy artist also. तो मैंने कहा कि यार why don't I use an AI of this singer and hear it कि कैसा लगता है, कि मैं उसको बुलाऊं और फिर गवाऊं और फिर कहूं यार नहीं मज़ा आ रहा है यार. It's waste of her time, my time, and generally relationship खट्टी ना हो, उससे बेहतर है मैं सुन लूं. तो मैंने उसकी आवाज़ को AI करके सुना. I liked it. And I was sure that this is the thing. I want to work with her. और मैंने किया है. And then I told her also कि मैंने ये किया है. She was very happy and it worked out great. So if you use AI in a good way, there is a great system. So these are just like satisfying things, but we actually use AI as tools to see how a singer can sound, a certain singer who can sing this without wasting his or her time. So things like that, man. See, this is the beauty about you. मैंने शुरुआत में बोला था कि आप एडाप्टिव हो चीज़ों को लेके, कि AI का ये जो यूसेज है जिससे कितना फ़ायदा हो सकता है कि आप किसी सिंगर को बुला के ट्राई कराओ फिर ना काम करे. It will make your life and everybody else's life. Yeah, because tonality is something which adds a lot of character and personality to a song. And if you can grab that through AI and use that before you get the singer, so you're sure कि ये गाना इस तरह का sound करेगा. It's fab. Superb. The mystery of that instrument which Sulaiman plays, how does it work? It's called a Zen drum. We always I was playing keys and I always wanted Sulaiman to. Now obviously he is a percussionist and he used to play drums, then he moved on to playing octapads and then programming on drum machine
And I saw this instrument somewhere on the internet. I'm like, wow, this is cool. Yeah, it has all these pads, and you can play a kick and a snare, and you can even play like you can play any sounds which are there on a software. You know, you can play synth, you can play big drums. And I was like, it'd be great if, you know, it looks cool, looks very like a new age kind of a thing. It has all these buttons and pads, and you can like, you know, you can like play kind of patterns and a drum pattern or anything. And, you know, I was like, Sulaiman, let's try this. And he tried it and he loved it. So I'm like, you know, I also wanted to wear one of those keyboard guitars and, you know, be right there in front and, you know, with the singer, sometimes sing the song myself, or if there is a co-singer singing, then like be with him, you know. I thought visually it'd be very appealing for the audience, for both of us to be there. But then, you know, I'm quite happy that he is right there in front of stage and I'm playing keys at the back. For the songs, I'm not singing with him. It adds a lot of movement, a lot of drama, a lot of screenplay in your concert. You know, it's nice when other singers come in and, you know, sing some songs. It's an experience to watch, yeah. I like to, you know, infuse some technology and, you know, some sounds that the audience hasn't heard before. And it's fun for us and for them. So हम लोग अभी लाइव की बात करें तो लाइव की मैं बात कर लेता हूँ कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स में कुछ चीज़ें तो आप काफ़ी बार बात कर चुके बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ हमारे देश में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है ऑन एनी फ्रंट चाहे वो आर्टिस्ट की फ्रंट से हो चाहे वो वेन्यूज़ हो चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो चाहे वो प्रोफेशनल डीलिंग का सिस्टम हो आपके हिसाब से कौन सी जगह आपको लगता है कि ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है हमारे देश में इन चीज़ों पे काम होना चाहिए थोड़ा एक चीज तो ये है कि when it comes to vendors, when it comes to venues, when it comes to all this, there is a great change. There's a huge. I want to always thank the industry, the community, for all the amazing. Like there are so many vendors now who are bringing in such great gear, equipment. Yeah. The bands are really working hard on arrangements. I see, like, you know, suddenly Shalmali's got a dance act, Jonita's got a dance act, Sunidhi to firecracker on stage. You know, Sonu's doing some incredible, amazing things. Arijit has obviously taken the game much higher. Rahman has, like, you know, all the composers and artists are really, you know, and the A game right now. Yeah. Vishal Shekhar, all of Pritam, everyone's like, Amit is like doing some fun shit. And like everyone's like really doing some great stuff. And vendors are doing some amazing stuff also. Venues also नए आ रहे हैं India में, you know. कम स्पीड से आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं. It's better than earlier for sure. Hey, it's great. You know, there are some. I mean, we are very proud that there's NMACC in Mumbai, you know, which is a world-class facility, and there are so many more, you know, theaters who are inspired to build theaters like NMACC and venues like that. You know, so great. What needs to be done is the audience needs to enjoy this experience and invest in buying tickets. That has not happened yet. I'm just going to tell you one thing, man. Taylor Swift is performing in Wembley Arena, okay, in the month of June. 5 concerts, bro. All are sold out. And it's not even open to public. It's only for the fans. So if you're a fan, you have to register, etc., etc. So imagine this culture. What we need to do as a community, India is 1.6 billion people. Every 6th guy on the planet is Indian. I'm not counting Indians outside India. What we need to do is we need, as musicians, as this thing, need to create this amazing experience for our audiences so that they buy tickets. They want to see an Arijit. They want to see a Shan. They want to see a Sonu Nigam. They want to see a Sunidhi Chauhan. They want to see a Pritam. We need to create this as a community. True. So that people buy tickets. I'm telling you, there's no country like India. We can rule the world. But people need to realize कि अरे ये YouTube पे देख लेंगे, अरे रील पे देख लेंगे. नहीं. Live experience का जो experience है ना, सब कुछ कमाल कर रहे हैं. Vendors are doing great job. Artists are doing great job. Venues are also coming up in a big way. Everyone's doing a great thing. It's the people that are not enjoying the experience because they're not spending money for the experience. And then that's a big hole is what I see, you know, for when tickets are on sale.
we're not able to sell. इससे क्या होता है कि you see Badshah also, his experience has like gone up. You know, I can see on his reel. A lot of artists are doing a lot of hard work, creating experience for their audiences. But people need to change. People who are watching this show, please know that you can make a difference by buying tickets to that show. सो मेरे इस पे 2-3 ओपिनियन है. पहला तो आपको गुड न्यूज़ देनी है. गुड न्यूज़ ये है कि स्टेटिस्टिकली कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, द नंबर ऑफ टिकट्स एंड द टिकट सेल्स हैव गॉन कंसिडरेबली हाई. For sure. Especially companies like Book My Show, PTM Insiders, Book My Show especially, are bringing a lot of international act, a lot of experience. Absolutely. And this, that's one reason. बिल्कुल. B जो इंडिपेंडेंट एक्ट है, क्योंकि पहले फिल्मों में जो एक्ट होते थे, जनरली लोग एक्टर और एक्ट्रेसेस को अज्यूम करते थे, देखते थे, तो उनसे वो उनके रिलेशनशिप बनना थोड़ा सा कम होता था पुराने प्लेबैक सिंगर्स और कंपोजर से. नए इंडिपेंडेंट जो एक्ट है, वेदर इज प्रतीक कुहाड़, अनुज जैन, देयर आर सो मेनी पीपल. They have a community, man. तो वो कम्युनिटी इंडिया में बननी शुरू हो गई है. बहुत बड़ी बात है. एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, मैं सारे आर्टिस्टों को बोलता हूँ कि ये जो कल्चरल शिफ्ट है ना, समटाइम्स इट टेक्स 50 years टू चेंज. और कल्चरल शिफ्ट क्या है कि हमको पैसे देने की आदत नहीं है एज अ कंट्री. क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बहुत लिमिटेड होंगे. Sure. स्पॉटिफाई प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बहुत परसेंटेज बहुत लिमिटेड होंगी. और टिकटें खरीदने की कैपेसिटी बहुत लोगों की है. लेकिन फ्री का पास मिलना एक तरह का वैलिडेशन है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है. सेम चीज अगर हम कोई इंटरनेशनल एक्ट को देखने जाएंगे तो हक से टिकट खरीदेंगे. अरे मैंने टिकट खरीदी है, कोल्ड प्ले की टिकट खरीदी है मैंने. बट इंडियन आर्टिस्ट को देखने के लिए आप टिकट नहीं खरीदेंगे. तो एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस बोलता हूँ कि हम सबको मिलके कैंपेन चलाना चाहिए, सबको. जिसमें पूरी म्यूजिक पे फॉर म्यूजिक. Yeah, Tarsim, I think it's a matter of time. Yeah. Honestly, I really feel like everyone, our artist community, is doing such a fabulous job in putting up such a great show, and I'm seeing it all on Instagram. You know, I'm seeing it. I watch everything. That it's truly matter of time now. Yeah. People would be like, I want to see this. I want to see this act. I want to see. ये होगा. हाँ, अगर सारे आर्टिस्ट मिल जाए तो हो ही जाएगा. सब लोग अगर. So this will happen very soon. I mean, it's already started happening. It's already happening. It's already happening in India. The opportunity is huge. Yeah, and I'm very, very grateful for artists who are taking the liberty, taking the call and saying, I'm going to do a tour on my own. It's okay for me to lose money. I'll do this. You know? So the hats off to them, and like, you know, big respect and love to them, and more power to them that they should do this. In fact, a lot of people should do this because this is how we can make that change. And when you're talking about live shows में बहुत experiences होते हैं कमाल के. कोई भी ऐसा experience है worth mentioning जो आपको याद आ रहा है अभी back of the mind में? Oh my God, there are so many of them यार. एक बड़ा funny सा वो है यार. बहुत मुझे कहने को थोड़ा weird लग रहा है, but मैं कह दूँगा. We were doing a wedding show in Grand Hyatt in Goa. And look, I generally I don't have this problem. But our show is like about 2 hours long. And I can manage, obviously. But, yeah, after 90 minutes now, I felt like going to the loo. And it was uncontrollable. Yeah, तासिम मुझे कभी नहीं हुआ है. But इसको कुछ वक्त हो गया. And I think I had a lot of water before the show. And even in the show, I was drinking a lot of water. And I just couldn't hold. So that segment I was singing all the songs. So we had to reshuffle our set. Raj Pandit, who sings with me, and Vipul Mehta, who also sings with me, I just had a word with them. I said, look, I'll be gone for 10 minutes. Because the toilet was very far away. दूर थी वो Grand Hyatt. मतलब it was like, and it would take me at least. वो अलग-अलग building है Grand Hyatt. हाँ, नहीं, we were in the ballroom. In the ballroom. It was a wedding show. We were in the ballroom, but still I know that the loo was far away. 2-3 गाने तो गए, तो तुम लोग कर लो, मैं भागता हूँ. And suddenly I was gone. I had to. I mean, it was not a big deal, but for me, I was like, those 15 minutes that I was controlling was like, I was like, yaar, kya ho raha hai? It was
जमी हट गई थी पैर से यार, you know, it was a little weird for me. So that was an experience that I'll never forget. It's a funny experience. It's not like anything crazy. हाँ, काम है कभी अभी कभी। मतलब ये obviously ऐसे बहुत सारे experience हुए जब हमने, you know, like we've done 6 shows in a row, and you know sometimes we've, like the driver's not driving fast and you know उसको नींद आ रही है, and like you know we're driving from Rourkela to Ranchi and it's only by road, you know, and like someone had to drive and the guy's not slept. दिन में हम ड्राइव कर रहे हैं, वो पूरी रात जगा था, तो दिन में ट्रैफिक में उसको नींद आ रही थी और सब ड्राइवर्स ऐसे थे बैंड के. So we all became drivers and we were driving to Ranchi. And the cars were not Innovas. They were Sumos. I'm talking about a long time ago. Tata Sumos, which were like hardcore Jeeps, like, you know, and, no automatic and all. They were like proper stick gears and all. So the band, we're like, you know, 4 in a car. We're like 16 of us. We're 4 cars. We're driving. Suleiman got 1 car, I got 1 car, and one of our bass players got 1 car, and like that kind of thing. So these experiences we've had, and we've done 5 shows in a row. 6 shows in a row that particular season. Like it was insane. We're driving, we're flying, we're all kinds of things. See, congratulations the number of shows you do in a year. Yeah, it's fun, man. And for so many years, it's not easy. Telling you. I mean, honestly, that's what also is a way that has taught me a lot about my fitness. You know, maybe it's probably a question of from you or whatever. Even if it's not, I'll say it. That this kind of a lifestyle, to be on the road, has disciplined me for many ways, like in many ways. Has made me realize the importance of sleep, the importance of water, the importance of meals on time, and so many things, like, you know, show up for sound check. It warms up it gives you a great warm up, and like, you know, the importance of exercising every day. You know, all kinds of, so many things. My life has changed because of my lifestyle on the road, touring. It's taught me a lot of things, you know. अगला सवाल है कि सिंगिंग में वर्सेटैलिटी कैसे लाए? यार ये तो ऐसी चीज है कि मतलब आदमी करते करते ही सीखता है यार. आप सोच के आए कि मैं गजल ही गाऊंगा तो कुछ होने वाला नहीं है आपका. बट आपको जाहिर है, आपको म्यूजिक तो सब कुछ पसंद है. आपको R&B भी पसंद है, आपको यू नो पॉप म्यूजिक भी पसंद है, और आप अपने आप को थोड़ा फ्री रखेंगे. बिकॉज म्यूजिक तो एक समंदर की तरह है यार. जितना डूबोगे उतना मजा आएगा. तैरना नहीं है, डूबना है. सो ये तो ऐसी चीज है कि यार ये तो इसको आपको कंट्रोल छोड़ना है अपना. हाँ, इतना करते करते आदमी सीखता है और मजे लेता है यार. जब हमने हमारी पहली पिक्चर ना, मतलब a lot of people typecasted us कि यार ये डरावनी पिक्चर ही करते हैं, भूत, डरना मना है, और इस तरह की पिक्चरें हम करते थे. फिर अब तक छप्पन आई तो उसमें वो भी थोड़ा मतलब ड्रामेटिक ही स्कोर था उसका भी. फिर अब तक छप्पन में से कुछ मतलब यू नो कुछ डायरेक्टर्स बोले यार ये लोग बैकग्राउंड स्कोर समझते हैं यार, चले ट्राई करते हैं कॉमेडी. तो मुझसे शादी करोगे हमने किया, कुणाल, कंप्लीटली डिफरेंट है, कॉमेडी फिल्म. उसमें एक विकेट सनी करके एक पीस बनाया हमने, और यू नो लाइक थिंग्स लाइक दैट हैपन. एंड सडनली यू नो लाइक अ फिल्म मेकर लाइक डेविड धवन की थी मुझसे शादी करोगे. देन कुणाल कोहली felt like maybe you know we should try them for Hum Tum. So we did Hum Tum. Hum Tum में एक piece था that you know Aditya Chopra heard, which is you know like a wedding piece, which he really liked. It was a song, and he said कि ये गाना पिक्चर में तो था नहीं, आप लोगों ने बनाया. I said हाँ, of course we made. आप लोग गाने भी बनाते हो? तो I said हाँ. So that's when after the movie he told us कि I have a film, Neil and Nikki, I want you guys to do it. तो करते 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 आदमी सीखता है. और हमने भी कभी यार बनाए नहीं थी ऐसी गाने, बनाए नहीं थे नील एंड निकी जैसी फिल्म. इट्स अ वेरी पॉप काइंड ऑफ अ कल्चर, यू नो, अ गर्ल मीट्स बॉय काइंड ऑफ अ फिल्म. वी हैड वर्कड ऑन भूत एंड टन्ना मना है एंड ऑल दिस वेरी ड्रामेटिक फिल्म्स. एंड करते करते ये फिल्म कर लिए ना, ता तारा ना तारा नीला निकी ता तारा. ये गाना करने के, ये एल्बम करने के बाद आई रिमेंबर वी फिनिश्ड दिस एल्बम एंड you know, Adi told us that like there's a movie, very, very difficult film, but I think you guys may be able to crack it. Shimit, who you have this connection with from Ab Tak Chappan, is doing Chakti India. Now sports film, to fashion, to Qurban, which had a Sufi palette. So, you know, we were just
thrown these experiences, and that's what made us versatile. यार आदमी काम करते करते सीखता है यार. एंड इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है टाइप कास्ट का कि ये तो सिर्फ टेबल बना सकता है, ये मतलब दरवाजा नहीं बना पाएगा. ये क्या लॉजिक है यार? मतलब ही इज वेरी गुड एट ओनली दिस. इट्स नॉट लाइक दैट. Human beings are, if a creative person is like, making a certain kind of painting, he can make any kind of painting. He's a painter. ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? So yeah, तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, but now it's getting better and better. आप कॉन्सर्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैं साउंड चेक पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ यार. मैं वेन्यू देख लेता हूँ, अकूस्टिक्स देख लेता हूँ, इन ईयर्स की सेटिंग ले लेता हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ अपने आप को, और गाते गाते करते करते मैं 2-3 गाने गा लेता हूँ, तो मेरा वार्म अप हो जाता है. एंड उसके बाद मैं रूम में जब जाता हूँ ना, तो आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू. हालांकि आई डू सो मेनी शोज दैट आई नो द सॉन्ग्स इन एंड आउट, बट आई ऑलवेज ट्राई नॉट टू कम्फर्ट माई सेल्फ. एंड आई टेल माई सेल्फ दैट यार मैं इस बार ना ये ट्राई करता हूँ. अगर मैंने कोई चीज़ सुनी है, कोई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है सुनते हुए, या किसी का मैंने शो देखा, लाइव शो देखा, या किसी की इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी कि उस किस तरह से उसने वो पार्ट को गाया, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी कोशिश करता हूँ. कुर्बा हुआ तो मैं रोज गाता हूँ. इस टाइप का, अलग टाइप का कुछ थ्रो ट्राई करूँ क्या? तो मेरे को बहुत कीड़ा है यार, रोज कोशिश करके कुछ अपने आप को रीडिस्कवर, रीडिफाइन करना. 5-6 साल अगर एक ही गाना मैं बजा रहा हूँ, तो आई ट्राई टू रीग्रुप विद माई बैंड एंड rehearse the song again and like change the arrangements, and I'm sure you worked with a lot of artists who do the same thing, and I'm exactly that. I've been playing this song for 10 years. How do I kind of make it different for myself so that we feel like, wow, this is a great experience. I want to have a great time on stage. I believe agar I'm having a good time on stage, Then only there's a huge chance that people will have a good time. So believe me, Tarsim, sometimes I don't have a big audience, okay? I have a small audience, but I really have a great time on stage. For me, it doesn't matter if everybody's on the floor or not on the floor. I'm on stage with my brother and my band, and we are killing it. एक्चुअली अगर आपकी कॉन्वर्सेशन से 2 बातें मैं सीख पाऊँ, या हमारे पॉडकास्ट में जितने लोग भी बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, ये 2 बातें अगर कोई भी सीख लेना, उनकी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी. पहली चीज़, सीखते रहना चाहिए, जस्ट कीप लर्निंग. और सेकंड चीज़ ना, ऐसा फील ही मत करो कि आप काम कर रहे हो. आप सोचो कि आप हॉलीडे पे हो. हाँ, मतलब आप चिल कर रहे हो. How lucky are you, man, that you're doing music and तो अगर ये 2 चीज़ें अप्लाई कर लिया तो फिर प्रॉब्लम से खत्म है. अरे रिकॉर्डिंग है, अरे ये मत सोचो, रिकॉर्डिंग है, वाओ, लेट्स गो, लाइक अरे यार कल फ्लाइट लेना है, शो पे जाना, अरे कल शो पे जाना है, बी एक्साइटेड. ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग टैलेंटेड है और वो नॉट सक्सेसफुल. बी ग्रेटफुल. True. What are the special challenges and pleasures of working on film scores? Again, it's the challenge is firstly to always reinvent yourself. If you're doing a romantic film, a rom-com or a comedy or whatever, how do you reinvent and rediscover yourself to create a great experience for yourself as a composer? Same logic. If you create that, the audience will feel that. They will feel that scene represented in a different way. आप वही आपके sounds और tones और tricks use करते रहेंगे. Monotonous हो जाता है वो एक. For you. Yeah. आप घर जाओगे सोचेंगे कि क्या मैंने क्या किया आज यार, काम ही किया, आर्ट नहीं किया, टास्क किया. So that's the difference. Yep. And most of the time when you're given a project, whether it's a thriller, whether it's a courtroom drama or a rom-com or something, there are certain set things that, okay, let's load these sounds. Okay, you open your contact player and this. Get out of that. Don't have a set palette. Try to change your palette. And then see what happens. When you have a set palette, आप ऑटो फोकस में कर लेंगे ना तो सब एक ही जैसे ही दिखेगा. But if you try to kind of move things around a little bit, your frame will start looking better. Yeah. So it's different, and it'll be great for you.
as a creator and as a viewer too. So it's nice sometimes to just do that, like, just break that monotony and that palette, that standard palette, and just discover something new. ऐसे बहुत सारे programmers हैं, बहुत सारे creative people हैं, music producers हैं, जो वही set, they have thousands of sounds. But yes, each sound takes time to audition and to this thing. Put that time in. It's nice because then you will be not only giving yourself the experience, but the audience that experience as well. And it's fun. The purest form of music. And most of the time they're like, just practicing riyaz. They're really like, at peace and one with the Almighty. And the audience is just experiencing that. It's the purest form of music. It's the purest form of art. Without any kind of, there are some instances where you feel कि थोड़ा सा कलाकारी हो रही है, थोड़ा दिखावा है, थोड़ा ये है. But वो music का श्रृंगार रस है. It's the romantic element in the music. It's fine. But yes, it is the purest form of music, and it'll be there forever. It's timeless. Okay. What do you feel needs to be done to grow classical music audiences? I don't think anything needs to be done. Classical music has been going on for centuries. Yeah. And will continue to go on for centuries. So I think there are a lot of influences in बहुत कुछ most आया commercial गया. music आते रहता है. बहुत कुछ आया गया और चलता रहा है, कुछ नहीं. Like hip hop is a beautiful genre that is really empowered now, and it has empowered a lot of new talents. Classical music की audience, उसके listeners, उनके चाहने वाले, वो हमेशा रहेंगे. वो चलता आ रहा है, going on since the Vedas. It's like devotional music. It's been going on for centuries and will continue to go on for centuries. Correct. It'll never change. अभी जैसे कौशिकी चक्रवर्ती है. उनकी शो, कौशिकी जी के shows book announce होती ही बिक जाते हैं. Correct. So there are lots of artists like that. Yeah. Classical artist actually is a very blessed soul. Okay. Ask him about Sufism, your connection with Sufism, and he loves your Maula Meri Jaan and Shukran Allah. I remember Rahman called me one day and he's like, he really loved Maula Mere. So he messaged me and then he called me. He called me for Shukran Allah actually. And that gave me and then one day it was his birthday and I met him at his house and we were talking and he told me one thing that, a lot of people ask me about making these devotional qawwalis and things like now I'm slowing down and Salim is taking over. So I was very happy that he said that. I never do it for any purpose or anything like that. Actually, it's a very natural element. Like when I was growing up, I started playing in my school church, organ. Because I was just very young, I was in 6th standard, I was studying piano. और वो हुआ ये था कि मेरे स्कूल में, चर्च में ना, जो पियानिस्ट था वो छोड़ चुका था, जो ऑर्गन प्लेयर था. वो एक्स स्टूडेंट हो गया, मतलब वो 10th तक बजाया फिर वो चला गया. एंड देन वो एक्स स्टूडेंट होते हुए बजाता था, देन ही हैड टू गो समवेयर, लाइक ही हैड टू गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस और व्हाटएवर. So there was so as a necessity, because I could read music, I was studying music and I could read, so I became the official church mein organ player. So I was studying classical music, Western classical music, piano. I was also studying Indian classical music from Bharati Vidya Bhavan, harmonium सीख रहा था मैं. तो मेरी रागों की knowledge भी थी, तभी piano भी सीख रहा था मैं. And suddenly I got thrown into this devotional world. And I, as an Ismaili Muslim, was also practicing my faith ke gaane, Naat Sharif, Ginan, a lot of music that was sung and recited, which had a devotional touch of my faith. So it was a great mix for me to play this and that. Then my love for bhajans happened because I met Ustad Sultan Khan. His first album, he had a bhajan, which I fell in love with. It was called Kareman Bhajan Nu Vyapar. It was a Gujarati bhajan. And that bhajan it did something to me. Then I realized that I have a very strong connection with devotional music. From the age of 11, 12, I was playing in a church. I was doing my Islamic things, my music thing anyway, and which was happening in my
Jamaat Khana Mosque, whatever. And then I got attracted to this bhajan. And then, then I started, realizing that how Krishna bhajans and then Shiv bhajans and, then all this other world of all other faiths like Sai bhajans. And then, I realized that this is something that really attracts me. अब हुआ ये कि ये तो चल रहा था. I mean, I was growing as a musician, this and that. जब फिल्मों में भी जब मेरे गाने आने लगे ना, the song that really became popular was शुक्राना ला. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. No, these are essentially love songs, but it had a devotional connect. Ali Maula, Rab Rakha. All these songs became popular. And I realized that it actually has such a beautiful connection of my past. This form of music, which is devotional music, really attracted me in a very strong way. I can't express and explain what it is, but it somehow makes me a better human being, Darsim. It makes me a better human being. It makes me respect and love different people, from different faiths, and also makes me more knowledgeable. I started finding out how Ganesh, Kartikeya was Shiv's, and then also had Ashok Sundari, who was Shiv's daughter. And I've got attracted to Shiva, and then I found out about Krishna. And then, this all happened through music. I started learning more about them. And it attracted me, it gave me more, it pushed me to learn a little bit more. It's just my own this thing. Of course, I know my faith and my this thing. And music, they all sort of have the same thing. Yeah. They all spread the same message, which is love. That's it. It all had that. And I realized that this is such a beautiful thing to know. And I still don't know everything. I'm still learning. And I'm still growing in this field of devotional music. But I'm very attracted to this form of music. चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो. मैं जब पहली बार माथा टेकने के लिए वहाँ गया था, दरबार साहिब अमृतसर में, तो वहाँ पे जो कीर्तन चल रहा था, वो it actually took me to a trance, world. Believe me, I know this, that in my past life, I was a Sikh. I felt like an outwardly experience. I felt like मैं यहाँ नहीं हूँ इस दुनिया में. मुझे मेरा पुराना जन्म याद आने लग गया था. मतलब I can't explain it to you. I was trembling at that time. So ये devotional music के power है. जगह की तो जगह की तो अहमियत और इम्पोर्टेंस है ही. पर वहाँ पे जो म्यूजिक, जो कीर्तन, जो अरदास जो चल रही थी ना, वो मुझे कहीं ले गई. So I believe that it's, there's something to do with devotional music that has a very strong connect with. To use Sufism is actually devotion. So it's a philosophy, yeah. Sufism is it's all the Sufi saints have said the same thing. Yeah. Love is their final message. Ultimately, everything boils down to that. Final message. It's ultimate love is for your Murshid, is for Almighty. How to develop ears for music production? Any particular exercise that you do suggest? Man, keep listening to all kinds of things. You listen to a jazz record and say, hey, yaar, ye main nahi sun sakta hu. Don't do that. Listen to it. Feel the instrumentation. Feel the intimacy of that album. Understand what the writer is trying to say. You listen to really banging 4 on the floor kind of music. Bahut chori. Nahi. Don't do that. Listen to it. Understand the frequency. There is, all the music is an art form. It's a form of art. It's been done with a lot of heart. Art and heart just have a beautiful thing. So listen to it. Don't be close to it. As a music producer, listener, you have to be a listener. You have to be a good listener. Why no Salim Sulaiman, Sonu and Shreya trio nowadays like Ishq Hua and Ispal? Oh, good question. Well, it's funny. I'm actually working on a movie right now, and we're considering to have the legendary Sonu and Shreya come together to do this duet. Yeah. But yeah, I mean, it's also, Darsim, again, a lot of, kya hota hai, speculation ho jata hai. When you do this, na,
अभी बहुत सारे फिल्म आए हमारे पास जहाँ पे वो एक वो हो गया था कि यार they also sang Shukran Allah by the way together. Yeah. So there's always that thing कि यार let's have Sonu Shreya. But then again वो comparison हो जाता है कि यार you know ये वैसा नहीं था. हालांकि भी गाना बहुत अच्छा बनाया है. लेकिन अरे वो इश्क हुआ जैसा नहीं था, अरे वो शुक्रान अल्लाह जैसा नहीं था, अरे वो तो I'm not scared of any comments or any kind of reactions, but I myself feel that we should reinvent, like have Shreya with probably some other singer and Sonu with some other female singer, just to reinvent and change the palette around. But वही है कि like you do a song, there's always like as a composer I want to create a different palette for myself, so that it's not like इस पल में, it's not like इश्क हुआ, it's not like रब रखा, it's not like शुक्रान अल्लाह. There are many songs they've sung for us as duet. जब प्रोजेक्ट सही होगा तो ये अपने आप होगा मेरे ख्याल से. हाँ मतलब yeah, these things Correct. you can't really orchestrate. करेक्ट. आप लोग किस सॉफ्टवेयर पर म्यूजिक बनाते हैं? हम जैसे अगर सीखना चाहते हैं तो कितना वक्त लगेगा? यार म्यूजिक सॉफ्टवेयर पे नहीं बनता. पहली बात तो म्यूजिक तो मतलब दिल से बनता है. आई थिंक वो पूछना चाहते हैं कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं? I mean, we've been using Logic for a very long time, but also Nuendo as a recorder. So it's a combination of a lot of things. But like I said again, software is just a tool. Yeah. हाँ जी. And ultimately it's गाना तब होता है अच्छा जब आप उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बिना गा सको या एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गा सको, without any beats, without any software, without anything. That's a sign of a good song. करेक्ट. जब आप अकेले में गुनगुनाओ तब भी आपको अच्छा लगे. हाँ जी. है ना? पुराने गानों में वो खासियत थी कि जब आप that's a good sign of a timeless song. Then you can sing it anytime, anywhere, without any instrument. एक्चुअली ये मैं आपसे बात करते सोच रहा हूँ, ये एक्चुअली सही बात है कि जो भी अच्छे गाने हैं जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारी तो सिर्फ वोकल्स ही होती है ना. हाँ जी. और सुर भी नहीं होता. बट हर आदमी को वो पसंद आता है क्योंकि इट्स इजी टू हम एंड पीपल लाइक पीपल कनेक्ट विद कभी-कभार मुश्किल गाने भी जैसे लग जा गले बहुत ही मुश्किल गाना है, हालांकि लोग गा लेते हैं. मतलब मैं वो नहीं, ये कुछ गाने जैसे मदन जी के गाने, मदन मोहन जी के गाने में नहीं रिस्क लेते गाने की. और ऑफ कोर्स कमाल के लता जी ने जो गाया है, किशोर दा ने जो गाया है, रफ़ी साहब, आशा जी, इट्स टफ टू सिंग देम, इट शुडंट सिंग देम. बट कई कबार अगर आप गा भी लो तो वो गाने की मतलब वो गाने इजी लगते हैं बट है ही नहीं. करेक्ट. तो एनीवे खैर वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट येस, द फैक्ट दैट यू आर अट्रैक्टेड टू सिंग दोस सॉन्ग्स, वो ये प्रूव करते कि वो गाने में वो टाइमलेस क्वालिटी है. उसको कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई बीट्स, कोई अकम्पनीमेंट की जरूरत नहीं है. वो अमर है वो गाने ऑन देयर ओन. अगला सवाल है कि आप अपने आप को एज अ वोकलिस्ट 10 में से कितना रेट करते हो? 0. मैं सिंगर हुई नहीं यार, मैं म्यूजिशियन हूँ. मैं गाने बनाता था, पहले मैं बजाने लग गया था, फिर मैं कंपोज करने लग गया. पहले मैं तो आई वॉज जस्ट वर्किंग विद अदर कंपोजर्स एज अ म्यूजिशियन. देन थोड़ी हिम्मत बढ़ी, गाना बनाया तो लोगों को अच्छा लगा, फिर और बनाए तो और अच्छे लगे, वो गाने पॉपुलर हो गए, और हिम्मत आई. अब गाने बनाते बनाते ऑब्वियसली मैं गाने लग गया था यार. कभी सुखी आ रहा है गाने, कभी सोनू आ रहा है, कभी श्रेया आ रही है, कभी सुनिधि आ रही है. तो मुझे उसको ठीक से गाना था ना उनको सुनाने के लिए, तो मेरा गाना बेहतर होते गया. इतना बेहतर हो गया कि मैंने स्क्रैच डब करने की हिम्मत कर ली. और वो स्क्रैच गाना था, कुछ एक गाना था जो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि यार ये तो तेरी आवाज ही बेटर है, बेस्ट है, क्यों बुला रहा है किसी को. ऐसे नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है, नहीं आई वॉन्ट योर वॉइस ओनली. तो उस तरह से और हिम्मत बढ़ गई, और करते 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 मैं सिंगर बन गया. तो अगर मैं एक यंग कंपोजर हूँ, मैं आपसे गाना गवाना चाहता हूँ, हाँ जी, आप गाएंगे? ऑफ कोर्स. मैं कैसे गाता हूँ ऑलरेडी, बहुत करता हूँ मैं दूसरे बहुत कंपोजर्स के लिए मैं गाना गाता हूँ. इश्क वाला लव तो विशाल शेखर का गाना है. हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स होंगे जो शायद आप तक. हाँ, मैं कहता हूँ ए खुदा मेरा गाना थोड़ी है. That's not my song. That's Hanif Sheikh's song. I've only sung in that song. Fantastic. From the movie Pathshala. It's not composed by Salim Sulaiman. It's composed by Hanif Sheikh. Many songs I've sung for other composers. What's the best way to reach out
For anybody, I mean, जो आपको जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कैसे reach out कर सकते To me, my number, everybody knows, it's the same number since the last 32 years. हैं? But you're active on Instagram as well? Of course I am. Yeah. The people People can DM DM me, you, yeah. DM me, WhatsApp me. I'm on Truecaller. You just search for me. I'm there. You're the only person who's saying that. And यार मैं वापस कह रहा हूँ 4 दिन की जिंदगानी 3 दिन की कोई फोटो वोटो खींच रहा है ना ले लो उसके साथ यार don't have your security and all this don't create a prison for yourself life is too short कर लो make them happy यार it's too short it's gonna go it's Murphy's law whatever goes up comes down आप मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे किस तरीके के आर्टिस्ट अपने रोस्टर में रखना चाहते हो? मैं हर टाइप के आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता हूँ रोस्टर वर्ड में यूज नहीं करता हूँ हमने कभी सोचा ही नहीं है कि किसी आर्टिस्ट को हम साइन करेंगे एंड यू नो आई ऑलवेज बिलीव दैट इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सबसे बड़ा मुद्दा है फ्रीडम इंडिपेंडेंट म्यूजिक की शुरुआत ही वैसी भी है आप फिल्मों में एक बाउंड्री के साथ काम करते हैं एक स्क्रीन प्ले होता है कैरेक्टर्स होता है स्टोरी होती है वगैरह वगैरह डायरेक्टर होता है प्रोडक्शन हाउस होता है इट्स अ सेटअप इंडिपेंडेंट म्यूजिक has the freedom to create music without any kind of script, story, characters. If you are making music, which is non-film music, and you're a label, first understand the crux and the spirit of running an independent music label. Give the freedom to your artist. I do that. We haven't signed a single artist till date. We are 320 songs old now, the label. Not a single artist is signed. मर्चेंट रिकॉर्ड्स की बात हुई तो उस पर थोड़ा बात करते हैं. जरूर. अरिजीत आए थे उन्होंने भूमि के बारे में मेंशन किया पापोन आए थे इनफैक्ट आपका नाम और भूमि के बारे में काफी बार इस पॉडकास्ट पे मेंशन हुआ असीस आई थी असीस इनफैक्ट वाज द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट Yes, I know. I'm very happy. I'm seeing a journey and it's fabulous. It's really, really amazing. Whatever असीस ने मुझे ये कहा मैंने एक छोटा सा चैट शो किया था आई रिमेंबर during Bhumi and you know she told me this that you know पूरी दुनिया जानती है but मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ ये and that you know वो उस गाने की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ गई and we moved to Bombay and it's such a big thing. हर किसी की जिंदगी में ना एक आदमी एक हमेशा एक कनेक्शन होता है एक जरिया होता है and I love it when I can be a you know we are all particles there we're just connected somehow. So it's fabulous. It's great. और मुझे उसकी आवाज तब भी बहुत पसंद थी आज भी पसंद है. So अगर हम पूछें आपसे मर्चेंट रिकॉर्ड्स का मिशन या what is the purpose of why you started Merchant Records? What is the soul? Honestly, you know what? I always felt like there's such great talent outside. और मैं हमेशा देखता था कि people who have great songs, they never somehow get the opportunity. हमेशा वो प्रेशर रहता है कि ये हिट होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा. ये क्या है कौन कह सकता है हिट होगा नहीं होगा यार These songs should be out. आपने दिल से बनाया गाना कुछ सॉन्ग फॉर्म्स होते हैं जॉनर्स होते हैं जैसे कि गजल्स है गीत है ठुमरी है क्लासिकल है फ्यूजन है पीपल डोंट रिलीज दैट मटेरियल यार आई एम अ म्यूजिक लवर लिसनर forget about being a musician and composer and whatnot. I'd like to listen to that. And I'd like to see the world listen to it. So I wanted to be that boutique Zaria for them. For those artists who could release their music without any pressure. कि चलेगा, इसके streams होंगे. ये यार आप Spotify में भी देख लो. There are so many playlists. There's New Music Hindi. There's New Music Friday. There's Chai and Chill or something like that. Chai and Acoustic. There's folk infusion. There's bhajan and some aarti and bhajan. There are lots of genres, playlists. There is space for everyone. That's it. Why can't the label distribute all kinds of music and support artists and empower and be part of their lives to distribute that? It's a very simple logic. Yes, it needs guts to put some money around it. Because without some kind of marketing and some kind of strategy, nothing happens. But I'm not going to take this money in my grave, bro. So, I have a good car. I have a nice studio.
I have a good home, and I have really good people around. And I want to live my life. And this is my life. Merchant Records is my life. I'm having a great time. I'm not building a bungalow by the sea, because I'll never go there. I can be in my studio and feel the sea anyway. So I'd rather just live my life. This is great. I wish more people think like that. Somebody told me one thing, and I should say this in your podcast, that happiness is best felt when you give happiness to other people. And believe me, I started feeling that. Yeah. Money has stopped giving me happiness. It used to. I'm a human being. But now it's stopped giving me. Not as much. I like to listen to good music. मैं किसी का म्यूजिक सुनता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार काश ये मैंने किया था, काश मैंने ये म्यूजिक किया था. That excites me. I want to release that on my label. So that gives me a certain kind of high, a certain kind of joy. और ये क्या हम सोचते कि हम बदलाव, काश ये होता, काश ऐसा कुछ म्यूजिक बनाते, काश, अरे छोड़ यार. Be the change. Gandhi said that. Mahatma Gandhi said that. Be the change you want in this world. I started Bhumi because I wanted to do something which was a movement without any kind of boundaries. It didn't matter what kind of music you made. And I'm so grateful to our community of my friends that they've participated in, be it Clinton, be it Anurag Saikia, be it Mithun, be it Amit Trivedi, so many people. Sunidhi, everybody. These are singers, artists, of course, Papon and, people, writers who've come and done songs for which is Arijit, of course, Shreya, Sonu. It's been a... Planning Bhumi 3? Sir, 4 to ho gayi hai. 4 ho gaya. 2020 we did the first, 21 second, 22 third. We've done 4 seasons. 24 में 5th season? 24 is the 5th season. So, can we speak about that? Of course. क्या कर रहे हैं हम? There is a lot of thought to this time try and get global artists on this platform. Not so many, but at least get a couple to collaborate with Indian artists. So there's some synergy. We tried that. Papon के साथ हमने निनियोला को Assamese bihu में एक 6/8 का एक नशा होता है. It's a 6/8 rhythm. African music also has 6/8 rhythm. So when I asked Papon to do this bihu track which he played me on a guitar, I loved it. He said, नहीं यार मैं बहुत कर चुका हूँ bihu यार. I said, तो क्या हुआ? He said, but मैं उसको फिर बोला कि what if I bring in like an African co-artist with you? He said, now you're talking. So हर artist को एक collaboration की एक भूख होती है कि let's, and I'm just creating an environment for people to just mix, for traditions to mix, for worlds to mix, for people to come together. So there's more love, there's more synergy. कुछ हमारा music बाहर जाए, कुछ बाहर का music यहाँ आए. वैसे तो the world is a small place now. We are listening to all kinds of things on DSPs. But when artists collaborate, it's a good feeling. I think जब हम बात कर रहे हैं इसी दौरान पता नहीं कितनी सारी collaborations already चल रही हैं. Absolutely. तो ये एक प्रयास है, एक कोशिश है कि भूमि 5th season, which is Bhumi 24 में we'll try and do more global collaborations. थोड़ा business के बारे में बात करते हैं. Is Merchant Records a profitable venture for you? Yes, it is. And, it has become now. It's been 4 years now. I started in 2020. And just for the sake of understanding, it wasn't for the first couple of years. Yeah, sure. तो जो भी लोग लेबल से भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों ने शुरू किया और बहुत सारे आर्टिस्ट शुरू भी कर रहे हैं. हाँ जी. तो अगर आपका 100 रुपीस का रेवेन्यू है जी, so can you define how much comes from brands, from master, from publishing, from streaming, from YouTube? See bro, brands now you cannot count because it's not a recurring revenue. Brands is not a recurring. This is lottery. लगा तो लगा नहीं तो नहीं लगा. It's like yeah. I mean, you can't really expect a brand to come every year. So you have to depend on your streaming revenue. You have to depend on your production revenue. Your all kinds of as a record label, we are also an agency. We facilitate certain projects to happen. Let's say some artists want to create music videos and songs and so our label is not just a distribution label. We also a production house. We create that content. We create
music. We create music videos through our filmmaker friends and stuff. So we do that. So there is that revenue also. There is obviously now Salim Sulaiman is a very decently touring band. So there is a portion of Salim Sulaiman's touring revenue also that comes into Merchant Records. So there's that. But mainly it's the streaming revenue. And then it has to be, because the content has to make money. It has to, your music that you create, I hate to call it content firstly. Your music, your videos, whether it's coming from YouTube, whether it's coming from streaming platforms, it has to make money. Only then you can count it, because that's your actual recurring revenue. True. And then eventually you have catalog value and stuff like that. Of course, that's all IP stuff. But, for now, your day-to-day thing, you need to... So it's been now, we've done so many songs. 320. Yeah, and growing. So incredible. We are doing 15 releases now every month. So, wow. And there are special occasions like Shivratri pe we have 4 releases. Eid we have 3 releases, 4 releases. There are Valentine's Day, there are 3 releases. There is, something on happening on Ram Navami. There's something happening during Holi. And, we are a great country, man. So many festivals. There's a lot of music. All the best and congratulations. Thanks, man. Because पहली बात तो लेबल को प्रॉफिटेबल बनाना एक बहुत बड़ा काम है. It's not easy. A lot of people think, हाँ मैं अपना लेबल शुरू करता हूँ, कर लेता हूँ. More power to them. It's good to do it. And it's important to dive into this ocean. हिम्मत बढ़ती है और आदमी करते करते सीखता है. Also, मैंने भी एक पल आया था जब मैं सोचा था कि मैं I'll not be able to continue this. But, I was like, let's go, man. Let's see what happens. करते मजा आने लगा. And then I stopped thinking about the revenue part. तो अब अगर कोई लेबल शुरू कर रहा हो, it's good, man. Piece of advice for them कि ये बिल्कुल करना, ये बिल्कुल नहीं करना. Don't give up, yaar. Consistency is the name of the game. As an artist, I feel if you're starting an artist label, be open to releasing other artists as well. I've seen a lot of artists who don't release other artists' labels. Now they have. Yeah, now most of them are. But बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते. You could have done it from day one. The day I started my label, like the first song we released, I got a call from Vijay Prakash and Tapas Relia that we have a song, we want to release it. I was like, let's go. I was like, wow. Because Tarsim, from the very beginning, my logic is community. I've never thought about me, us. I've thought about us. It's always everyone. That's how we'll grow. Okay, एक वो है fan question है. Can we expect Salim Sulaiman collaboration with Zubeen Garg in future? Yaar, I want to get him on Bhumi 24. Please, you'll have to help me do it. Of course. Awesome, we're done. Yeah. I mean, okay, it is happening. Take this on record. Yeah, this is a promise. So let me give you this. Zubeen Garg was part of the original Bhumi album, which happened in 1998, which released in 2000. Khuno was the Assamese song which Zubeen sang. And till date, the song is so close to my heart. And it's my internal this thing that I want to get him. Cool. Merchant Records को कैसे approach करें? I have a fusion song, exactly of that feel. Sure. Also recording a video. Reached out to Sir Shivansh Jindal and Merchant Records, but कोई reply नहीं मिला. It's negative, bhai. We are very prompt. Maybe if it's happened just 3 days ago, we have a week's time that we reply. It's Merchant Records. That's also very fast. The number of... And the thing is, Tarsim, that, Shivansh and me listen to songs together. So when I hit, let's say tomorrow I'm going to Kolkata, I have a show there. So I'll land at 12:31. I'll have lunch, I'll chill for half an hour, and then I'll call him and say any pitches, let's review. So even when I'm doing my shows, I'm reviewing songs. And, sometimes it's hard to say no. We sometimes re-listen and read this thing. So it takes a little time. अगर आपका reply नहीं है तो आप वापस भेज दो एक बार. Please have patience. कई कबार ऐसा भी होता है, guys, that वो mail spam में चला जाता है. It doesn't hit our inboxes. एक बार try,
Instagram DM. Try sending it to salimmerchant@mac.com, mac.com. बहुत मिलाने वाली है. चलेगा, Okay. Thank you for doing that. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. उषा उत्तुप एंड सलीम सुलेमान कोलैबोरेशन होगा भूमि में? I really would love to. I had thought about Usha ji. I'm so glad you brought it up. I want to do something special, but you know, ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन की सोच से गाना नहीं बनना चाहिए. गाने के हिसाब से artist. गाने के हिसाब से आर्टिस्ट पिक करे तो वो बेटर होता है. मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ. जब मैं हौले हौले बनाया था तो हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लग, वो मुखड़ा बन, तू सब्र तो कर मेरे यार जरा. तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो इमोशन है, यहाँ पे मैंने सुखविंदर को देख लिया था. तो दैट्स हाउ आई फेल्ट कि सुखी शुड सिंग दिस सॉन्ग. एंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट, दैट द सॉन्ग शुड गो टू. व्हेन वी मेड घर आओ ना, you know, I love that song. I wanted, thank you. I felt एक तो वो लड़की के लिए बना था गाना, because it has that, you know, बूंदे ये बरसे है, नैना ये तरसे है, घर आओ. A lady waiting for her beloved, a husband, a lover to come back home. Because, you know, it's so. So I had thought of, at that point I thought, okay, you know, I mean, it'd be great if Sunidhi sings it, and, you know, I played it to her. And so these things happen after making the song. मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सुनिधि चौहान के साथ मुझे गाना करना है. अब मैं गाना बनाता हूँ तो शायद मैं कोई ऐसा गाना बनाता जो शायद, but you know, घर आवना, वो it turned out to be so beautiful also because it was a little bit unique for Sunidhi, you know. I mean, she sung all kinds Proper of. concert full गाना मतलब. It has all kinds of. She sung all kinds of songs. बहुत गाने गाए उसने, मतलब सैकड़ों गाने गाए, all different genres के, and very versatile. But I think this Bandish kind of a song was a bit new for that time for her. मतलब she sung some before, but like, you know. In fact, the video is so good. Yeah, it turned out to be very cool. Performance videos is always nice because you see all the music being created like live, and you know, it's very engaging. कुछ और छोटे छोटे सवाल है. What सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? बहुत ही बकवास शब्द है यार ये. बिकॉज होता क्या है कि एक बार वो मिल जाता है तो इट्स लाइक व्हाट नेक्स्ट. इट्स एक्चुअली अ प्रेशर, यू नो. देन यू फील लाइक यू गोना सरपास दैट एंड देन फाइंड सक्सेस देयर. फिर उसको हासिल करने के बाद और एक यू नो फतेह करना है कोई माउंटेन. तो व्हाट इज दिस? इट्स लाइक, यू नो, व्हाई क्रिएट दीज लैंडमार्क्स? अपने आप को अगर आप इतना प्रेशर करते हो विद दिस टैग कॉल्ड सक्सेस, तो then you're digging your own grave, yeah, in my opinion. So I think it's not a word in my dictionary. Success is not a word in my dictionary. So we'll take it as success is overrated. It's a problematic word in my opinion. और आप इतने सारे काम करते हो, आपकी टीम भी काफी बड़ी I'm होगी. very blessed. Yeah. नहीं, टीम इतनी बड़ी नहीं है, quite honestly. कौन कौन है टीम में? हम एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं टीम को. जरूर. So Nirav has been my family. I mean, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीरव आएगा तो मैं उसको पकड़ के बैठाने वाला था, बट आया ही नहीं. तो नहीं, जानबूझ के नहीं आया मेरे ख्याल से, because you know how he's never on camera. So I guess he's very smart. He's seen your shows and he's realized that, you know, I don't want to face the camera. So Nirav has been, you know, I keep saying, मैं जब नीरव को introduce करता हूँ किसी के साथ, मैं बोलता हूँ I've been working for this guy for the past 22 years. And honestly, like, शादियाँ नहीं टिकती है, but I've never been with any agency in my life, you know. He is my agency and I am his. So we are like friends, and, you know, we run this. Trust me, I'm saying this with a lot of responsibility and experience. You don't need one. I mean, you're very grateful. Obviously, I never felt the need. He's a friend, and we, you know, there's great respect and love for each other. And so Nirav has been with us for past 22 years now. There's Raj Pandit, who's a very brilliant musician, singer, music producer. 10 साल हो गए मेरे ख्याल से. नहीं, ज़्यादा हो गया. सॉरी, 14 साल हो गए. नहीं, माय गॉड, 2011 में, so 13 साल हो गए. Aftab Khan, who's an engineer, he's been with us for a long time. He now has his own facility called Headroom, जो उसकी खुद की mixing facility है. He mixes for everyone. But he started his career with us. And एक बहुत अच्छी बात ये है कि his father
was my father's engineer. So it's like a family legacy that's going on. And he started working with us at the age of like 20, 21. And he's 40 now. And 20 साल से उसके साथ में एक अच्छा, beautiful relationship रहा है. There's a new entry of one guy called Shivansh Jindal, who's the CEO of Merchant Records. I met him on Instagram. I used to run this thing called Music Mahfil every Monday. During COVID, I started a thing called Mondays were always like, क्या फर्क पड़ता था, COVID में हर दिन सेम ही था. तो I started something called Monday Mahfil. जब मैं लोगों के गाने सुनता था, Instagram live करता था, I used to call it Monday Mahfil. लोगों के गाने सुनता था और जो गाने मुझे पसंद आते थे वो मैं shortlist करके बोलता था कि I'm going to release these songs. ऐसे करते करते, so I had a bunch of songs which I knew that I'm going to release. Because obviously Merchant Records was created for not just for Salim Sulaiman, it was created for all musicians, everyone. तो यहाँ पर इस बंदे ने जो उसने मुझे अपना गाना सुनाया, and I loved that song so much, Tarsim, that I said I'm going to produce this song also. So that song was called Pata Nahi, and I started producing it also. And he was actually came from a business world. He was into consultancy. He worked for an American company called Bain. So he was a hardcore consultant into the whole in consulting business, and he knows inside in and outs of the business world. And he's a great musician. He's a songwriter. गाना गाता भी है, खुद लिखता भी है, compose भी करता है. So I asked him, like, what does he? He said, sir, I want to work with you. He himself planted this thing, and at that time I was I'm a very self-made, like, not a control freak, I'd say, but I like to do things on my own, So I said, chal, theek hai, but I needed some assistance because my label chalana aasan kaam nahi hai. So I got him on this thing, and then he moved to Bombay, and he's been running it for the past 4 years. So he's quite a crazy guy, sleeps 5 hours a day, maybe 4, does all kinds of things, writes a song, composes a song, reviews a song, makes decks, everything, pitches a song to the business side, distributes, all the coordination with Warner, PR, everything, does everything. So we are, and then there's a girl called Radhika. She handles our travels, logistics, a lot of our, making things happen, shoots, executive producer, stylist, blah, 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 blah. So she's also a multi-faceted person. So there's Shivansh, there's Radhika, there is obviously Aftab, Raj and Neerav, not in that order. But yeah, that's a very small team. But then we have some other really cool people working with us. There's a guy called Aditya Kalve, who's a fantastic singer-songwriter, also an engineer. There's Mohit Bharti, another, so he also works with us. There's a girl called Vidhi. She's also a singer-songwriter. She works with Merchant Records. There's a guy called Boni, again, a percussionist, producer, works out of Delhi. There's Anshuman Sharma, who's independent but also works with. So there is a sub-team as well, who's not directly working but kind of working like a family with us. Very good. And if I have to ask you that, who are the most important people who has been responsible for to become this Salim Merchant who you become today? My brother, Sulaiman. He's empowered me, man. And how is the relationship with him? Like, he's my first musician I interacted with. He's my brother, my real brother. We heard music together. We played together. We fought a lot. We still have arguments. How do you handle those creative differences? Yeah, we figured it out. Yeah. Well, it's been 32 years now, Tarsim. It's been a long time. So, these things we figured out. Yeah. 1-2 saal mein we realized, you're good at this, I'm good at this. Mm-hmm. You don't interfere in my space. But then we keep interviewing. Roz ka abhi hum flight pe thoda sa jagda karke aaye. So it's like the next thing he calls me, says, hey, you know what? I got a call from so-and-so and like, we got to do this. I'm like, okay. So we've just had an argument about 30 minutes ago. And then we are working on अच्छे रिश्ते ऐसे ही होते हैं. यार खून का रिश्ता है, कुछ अलग ही है. So I think he's the reason also he's empowered. He's given me the freedom, to, of course, to do what I want to do. So there's a lot of that.
तो जैसे लोग आपको सुनते हैं, आप किनको सुनते हैं? मैं सबको सुनता हूँ. Anything which comes to your mind, like generally you listen to? म्यूजिक की बात करें आप? मैं I listen to a band called Dirty Loops. I really love them. I've been listening to Taylor Swift recently. I mean, I've listening to her पहले, but अभी भी सुन रहा हूँ उसको. I'm listening to some old records like Ustad Ghulam Ali Saab, Mehdi Hasan Saab. I love listening to Madan Mohan ji even today. I listen to bands like, I listen to Seal, one of my favorite artists, really good singer-songwriter. I listen to Sting, I listen to Chick Corea, who's a jazz pianist, no more now. So it's a varied, this thing, I listen to Ustad Zakir Hussain. I listen to all. And you interact with so many young musicians. Any I don't musician- think of any legendary guys anymore. Yeah. I'm just thinking like, if I collaborate with somebody who's just a boy or a girl next door, I'll have happiness in that also. Have you come across somebody who you really feel is like extremely talented recently? There is a singer called Hansika Parekh. She's fabulous. There's a singer called Pratiksha Srivastav. She's fabulous. Great singers. Can we see something in Merchant Records with Of them? course, we've already done songs with them. Superb. There are two singers who just come to my mind. There is a singer called Aditya Kalve. He's working with this Mohit Bharti. They're both amazing also. Really cool. There are so many artists. Bhai. There's Sanjit Hegde, who's amazing. I want to work with him. He's popular. बहुत मशहूर है, मतलब he's popular in the circuit right now. There are lots of singers who've found great success. There's Vishal Mishra, very good singer. Doing very good. Yeah. But still, like a singer who always steals my heart. There are 3-4 singers who are like, I mean, more than like 5-6 are just like Arijit, Sonu, Shreya, Sunidhi. These singers are just like, there's so much on my radar always. Sukhi. That I'm very fortunate and grateful that I can call them my friends and, we can hang out and talk about life, not just music. और आपको जब लोगों से मिलते हो, आप किसी से भी मिलते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत स्माइल आती है आपके चेहरे पे कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पसंद आते हैं लोग, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पुट ऑफ हो जाते हो कि यार दिस इज समथिंग व्हिच इज अ कंप्लीट नो फॉर मी? मुझे अभी मेरा एक 2.0 वर्जन चल रहा है. मैं काफ़ी कुछ चीज़ें त्याग दिया हूँ ज़िंदगी में, तो वो ऐसी कोई फीलिंग, मुझे हर चीज़ में खुशी मिलती है जहाँ पे लोग कुछ क्रिएटिवली कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. when they are bold, when they are taking risks, कोई कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, जैसे कि आपने ये शुरू किया है पॉडकास्ट. इट्स स्प्रेडिंग सो मच हैप्पीनेस and it's great because it's knowledge and happiness, it's entertaining as well. So I mean I really feel very happy for you. पहली बार आपने कॉल किया था, I was like wow Tarsik, this is superb, बहुत मजा आया मुझे. So मैंने आपको बधाई दी and I felt like this is good. So that's a great time and I feel very happy when people do a new song which is like out of the box, and they take a risk and they don't think like अरे कितनी streams होगी, इसकी कितने views होंगे. I like that because, that's a true sign of a true artist, of doing something which is path-breaking. चले ना चले वो दूसरी बात है, but एक करना वो कमाल की बात है. Like I love the fact that Arijit took out this, started Orion Music and, he did some cool songs out there and that through that label. And even though he's so busy doing his film stuff, he keeps doing it. It's just great. And consistency is a very good thing, I mean, he's got a passion for, because he himself, I guess, is also a writer, he's also a music producer, he's also a filmmaker in his head, he wants to do different things. और आदमी अगर अपने आप को बांध लेता है कि मैं यही करूँगा सिर्फ, हालांकि मेरी नज़र में सिंगर अव्वल होता है. ये ऊपर वाले ने ये देन दी है, वेद में लिखा हुआ है, तो मतलब ग्रंथों में के सिंगर अव्वल होता है. पहले गायक अव्वल, वादक, फिर नृत्य, फिर अभिनेता. हालांकि हिंदुस्तान में उल्टा हो गया है अभी, थोड़ा अभिनेता पहला हो गया. बट आई गेस, singing is such a big thing, because it's a straight blessing from the Almighty, and not everybody has that blessing. आप सीख के कितना सीखोगे यार.
You have to be blessed with this. You know, you can learn and you can make yourself better and better and better, but that blessing needs to happen. वरना तो सीखने से तो हर कोई तानसेन हो गया होता. अगर किताबों में ही लिखा होता तो हर कोई हो गया होता. तो ये तो ऊपर वाले की नियामत है, for sure. सर मेरा आखिरी सवाल कि अल्टीमेटली मतलब आपके जितने भी चाहने वाले, उन सारे चाहने वालों के मन में, यादों में आप कैसे रहना चाहते हो? मतलब व्हाट डू यू वांट देम टू फील? कि मैं कुछ उनकी खुशियों का एक हिस्सा बन पाया. वेल सेड. तो मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला आज. मैं अपना सम अप करता हूँ. पहली चीज कि हॉलीडे पे रहना चाहिए. ठीक है. अच्छा है. सीरियसली इट्स ट्रू. दूसरा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, सीखना चाहिए, यू नो. तीसरा कि बंदिश नहीं होनी चाहिए क्रिएटिविटी में, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, मिलना चाहिए, यू नो. और सक्सेस बहुत ओवररेटेड है. सक्सेस को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए. यू शुड एंजॉय द जर्नी. डेस्टिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी आज. आई एम श्योर मैंने भी बहुत सीखा है तार से. अगर ये चीज़ें हम अप्लाई कर पाएँ लाइफ में तो इट विल बी अ बेटर लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. एब्सोल्युटली. वो एक बहुत हज़रत अली का कलाम है कि वेल्थ इज समथिंग दैट व्हेन यू स्पेंड इट यू लूज इट, बट नॉलेज इज समथिंग दैट व्हेन यू स्पेंड इट यू गेन. Yes. So I have enjoyed this podcast. Thank you, Salim. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure.